Here we go. No, I look too big. Sorry, I'm going to cancel this background. We are live now. Assalamualaikum everyone. It's Batool and Zainab here. Assalamualaikum everyone. I'm Zainab. I think हम लोगों का ये second live है this year. So hopefully by now people know my name too. And then we have our all-time favorite. I'm Zainab Kadir, and then we have our all-time favorite Batool Mirza. So today, what we are going to talk about a different, another aspect of autism and how it affects the speech and the behavior. This is like a different domain, a slightly different domain than the biomedical approach that we have been talking so far. That is right, absolutely. But it could be different, but it's as useful and as important as that part of it. And I have to say this, why we decided to do it is really, really important, because we are trying to really work on simple and solution-oriented strategies, right? Which are easier for parents to understand, easier for parents to actually apply. And we're still learning, and every time we learn something new, we are so excited, and we always want to share it with you guys. So I'm very excited for this one. I'm here to listen to Batool, what she has to share, and I'll be asking some questions in between. And don't worry, you guys can ask questions too. मैं आपके भी क्वेश्चन पढ़ के बतूल के साथ शेयर करूंगी, और हम सारे आंसर्स लेंगे आज. बिल्कुल ज़ैनब, आज की प्रेजेंटेशन या स्लाइड जिसे आप कहें, मैं इसको आज के लिए नॉलेज सेशन बोलूंगी, बिकॉज आई फील लाइक कि हमारा ये जो ग्रुप है उसके अंदर, हाय अलीना, उसके अंदर वी आर वेरी मच अबाउट एम्पावरिंग पेरेंट्स, राइट? और एक्चुअली मेरी ये अप्रोच इस वजह से हुई बिकॉज व्हेन आई फर्स्ट हैड अ यान डायग्नोस्ड, तो हम लोग को काफ़ी इश्यूज हुए थे इन फाइंडिंग द राइट सॉर्ट ऑफ थेरेपीज और द राइट फिट ऑफ थेरेपीज. तो उस चक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिला, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने को मिली, एंड मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें दूसरों से शेयर करूँ और वो भी ये चीज़ें कर सकें अपने बच्चों के साथ घर के ऊपर. तो लेट्स बिगिन. Let me share my screen over here. Zainab, आपको मेरा screen दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल. So for those who don't know, हमने अपनी website launch की है. Zainab and I are there. We provide coaching sessions. So feel free to check us out. I'm going to begin now. Zainab हमारा introduction already करा चुकी हैं. आप please go on ahead and find us on the social media channels as well. मैं और Zainab हम लोग की जिंदगियों के बारे में बहुत personal snippets भी share करते हैं. The struggles that we have with our own children, जो भी victories हमारी होती हैं, even that. तो मैं please find us and follow us and support us. आज का टॉपिक जो है हमारा that is going to be primitive reflexes. लेकिन primitive reflexes उसकी एक ब्रांच है. Primitive reflexes के साथ एक पूरा बैकग्राउंड है जो और भी चलता है. मैं ये चाहती हूँ कि उसके बारे में आज हम डिटेल में जाके बात करें. तो बेसिकली स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने आपके पास कुछ टेक्स्ट लगाया हुआ है, एंड जो रिफ्लेक्स की जहाँ पे बात आती है, रिफ्लेक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जब ऑटिज्म की बात आती है, ADHD की बात आती है, जो भी आप कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी बात आती है, तो उधर ब्रेन की बात आती है. और एक्चुअली बहुत वक्त ये होता है, मैंने देखा, ज़ैनब मुझे बताना कि व्हाट आर योर ओपिनियंस अबाउट दिस, कि ऑटिज्म इज कंसिडर्ड मोर बिहेवियरल, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसका न्यूरोलॉजिकल भी इम्पैक्ट मौजूद है. एंड समवेयर अलोंग द लाइन आवर ब्रेन इज नॉट इंटीग्रेटेड, एंड आवर ब्रेन इज नॉट, व्हेन आई से आवर ब्रेन आई मीन द ब्रेन ऑफ आवर किड्स, इज नॉट इंटीग्रेटेड एंड इट्स नॉट बैलेंस्ड, which is the reason why हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी पे हो रहा होता है. What are your thoughts about that? I completely agree. And I think कुछ चीजें वो, there was I think I read somewhere else that there's a little autism in all of us, which was very interesting to see, because जो anxiety की जब हमने discussion की, वो भी हम relate कर सकते थे with ourselves. जब हम sensory integration की बात करते हैं, तो फिर भी you understand that we also have some of the sensory issues in general. And then जब आप अभी जब आगे जाके when you will learn more about primitive reflexes, I think we'll be able to diagnose a couple of them in ourselves as well. Oh, and we would say, I think the behavior is one part of it
which is far more exclusive to kids who has a diagnosis. तो इस वजह से वो चीज हाईलाइट हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज द ओनली रीजन, that this is the only struggle that there. So इसी वजह से इन चीजों को एड्रेस करने से you will definitely see improvement. So I agree completely. तो अगर आप वो ये इमेज देखें, मैंने इधर लगाया है बिकॉज आई वांट टू शेयर दीज स्लाइड्स लेटर, आप देखेंगे कि ब्रेन के अंदर कनेक्टिविटी लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर के ऊपर बहुत कम है एज अपोज टू द राइट साइड ऑफ द पिक्चर. वी आर गोना टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट मोर एज वी गो अलोंग. लेकिन इस चीज को कहते हैं जिधर हमारा ब्रेन कनेक्टेड नहीं है, इट इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्कनेक्शन. ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है इस कॉन्सेप्ट का कि जहां प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात आती है वहां पे फंक्शनल डिस्कनेक्शन का भी जिक्र जरूर होता है. Let's go ahead. So functional disconnection syndrome is basically the two hemispheres of the brain that are not connected. इसके ऊपर research भी काफी हो चुकी है और मैंने research paper भी इसमें लगाया है. If anybody wants to go see it, let me go back a little bit. And basically अगर आप ये देखें कि autism के बच्चे जो toddlers हैं, जो young बच्चे हैं जो कि autism के साथ diagnose हुए थे, तो उनके ऊपर जब रिसर्च की गई तो पता ये चला कि उनकी जो न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन है, अब ये मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रही हूँ और मैंने वादा किया था ज़ैनब से नहीं टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई करके चलूंगी. तो इन शॉर्ट हमारे बच्चों का दिमाग दोनों तरफ से कनेक्टेड नहीं है. अगर आप ब्रेन को सोचें तो मैंने एक बहुत अच्छा सा विजुअल भी ढूंढ के निकाला है, लगाया है. ये अगर आप ब्रेन को देखें तो ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से हैं. उन मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, डिफरेंट फीचर्स रहते हैं. हमारा ब्रेन राइट टू लेफ्ट भी इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट टू बैक भी इंटीग्रेट होना चाहिए. तो लैटरल इंटीग्रेशन भी होती है, वर्टिकल भी होती है. उस चक्कर में हमारे बच्चे जो हैं उनके पास ये इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है. तो यू विल फाइंड कि हमारे बच्चे अनकोऑर्डिनेटेड भी हो जाते हैं, या कभी कभी आपको ये भी नजर आता होगा कि एक एरिया में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरे एरिया में देयर लाइक सो स्लो या सो बिहाइंड. ये इतना इम्बैलेंस ऑफ स्किल्स क्यों है? You know, why are my... You mean कि एक part of the brain is more dominant than the other? Exactly. तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं, they can write really well, right? Photogenic memory is one of the... Yeah. Exactly. ये कि जो बच्चे जिनकी सोशल स्किल्स शायद कम हैं लेकिन you'll notice कि वो म्यूजिक बहुत अच्छी बजा लेते हैं. They're like really really good in, you know, playing complex music, complex melodies. तो ये जो इसको हम ऑटिज्म वर्ल्ड में ये भी कहते हैं savant like skills, जैसे कि मोजार्ट savant था, आइंस्टाइन भी savant थे. तो वो जो एक जीनियस लेवल की स्किल्स होती हैं एक एरिया में, लेकिन दूसरे एरिया में नॉट सो मच, इनफैक्ट काफी बिहाइंड होते हैं. तो these are the, obviously मेरी ये अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ना ही मैं ये खुद पूरा डायग्राम याद कर सकी हूँ कि दूसरे भी करेंगे, but it starts giving you a good idea. And actually this is very simplified version of what the brain looks like, because it doesn't show वो limbic system, executive functioning, वो वाली चीज नहीं है. This is just very simplifying that. And actually honestly speaking, the reason we have this picture here is उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको पता भी चल जाए कि स्पीच यहाँ पे है. हम लोग एक्सप्लेन फंक्शनल न्यूरोलॉजी को नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज अभी बतूल जो बात करी थी कनेक्शन की, तो ये बेसिस तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, दैट वी हैव होप दैट इवन अगर डिसकनेक्शन है, एंड दैट्स द होप दैट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हियर, कि अगर ये डिसकनेक्शन है so there are ways to improve this disconnection. There are ways to actually... तो brain की खूबी ये है कि brain can repair itself. Yeah, perfect, exactly. तो आपने ये देखा होगा कि brain injuries के बाद भी बच्चे, बड़े, adults जो भी होते हैं वो develop कर सकते हैं, अपनी lost skills को वापस ला सकते हैं. आपने notice किया होगा even in you know older population, जब stroke हो जाता है they can still recover. So the brain has the capability of repairing itself. So it's the same way कि हमारे बच्चों के भी जो brains हैं जो underdeveloped हैं. Actually, the right word over here is brain immaturity. Brain has not developed to its full potential. और वो जो potential पे नहीं पहुंच सका, that's what we need to help them recover from.
या लाइक तो कोप अप? फनी बतूल, अभी यहाँ पे हम लोग को मैसेजेस आ रहे हैं, वो it's it's like शफक सेज कि मेरा बेटा जो है वो म्यूजिकल नोट्स बहुत अच्छे अमेजिंगली पिक करता है बट लैंग्वेज में वीक है. फिर अरूज बता रही है कि मेरी बेटी, मेरे ख्याल में आमना हैज रियली सम काइंड ऑफ बिहेवियर दैट आई हैव टू, वो एवरीबॉडी कैन कनेक्ट कि भाई उनके बिहेवियर हमारे एज अ पेरेंट, आप सोचते हैं आप में भी थोड़ा ऑटिज्म है. एंड एक्चुअली दे सेड दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एज वेल, एंड दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं. वी वांट टू वर्क ऑन, we want our kids to reach their maximum potential. We are not trying to change anything. Oh No. yes, the neuroplasticity, we are trying to change the connections. Lekin hum personalities or themselves, we are not trying to change them. We are just trying to improve, and we all can improve in so many ways, obviously. तो इससे आपको मतलब पता ये चलता है कि ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में डिफरेंट फीचर्स रहते हैं. तो अगर ब्रेन आपका अंडर डेवलप्ड है किसी एरिया में, या किसी एरिया में ज्यादा स्ट्रांग है, किसी एरिया में वीक है, तो ऑब्वियसली आपके उन तमाम फंक्शंस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो दिस इज अ गुड डायग्राम टू हैव. एनीबडी हु वांट्स पीडीएफ स्लाइड्स, लेट मी नो, मैं शेयर करूंगी. अच्छा, तो जैसे कि बात थी कि हो सकता है कि हमारे पास ये सवाल है कि ये सब तो सही है कि जी ये फंक्शनल न्यूरोलॉजी आपने बताई, फंक्शनल डिस्कनेक्शन बताया, मगर हाउ डज दिस अप्लाई टू किड्स विद ऑटिज्म? सो दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट. हमारे बच्चे जो स्पेक्ट्रम पे होते हैं, यू विल नोट कि दे डू नॉट हैव अ गुड सेल्फ अवेयरनेस अपनी बॉडी की. मुझे ऐसे भी याद पड़ता है कि जब अयान की पहली दफा डायग्नोसिस हुई थी, एंड ऑब्वियसली हम उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर चुके हैं बाय नाउ, तो ही यूज्ड टू बम्प इनटू थिंग्स अ लॉट, यू नो, बहुत ज़्यादा चीज़ों से टकराना, या कि हाथ से चीज़ें गिर जाना, चलते चलते यू नो लड़खड़ा जाना. एंड आई वाज सेइंग व्हाट इज दिस? तो वो ग्रोस मोटर स्किल्स और बॉडी की सेल्फ अवेयरनेस वाज नॉट डेवलप्ड. फिर आप ये भी देखेंगे कि कुछ बच्चे जो हैं वो हेड टिल्ट्स के साथ चल रहे होते हैं. एक साइड पे, वन साइड और दी अदर उनका हेड टिल्ट होता है, या वन साइड और दी अदर वो लीन ज्यादा कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं बॉडी में डिसबैलेंस होता है. एंड दैट गिव्स यू अ क्लू कि यू नो आपका कौन सी साइड ऑफ द ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट चल रही है. सोशल एंड इमोशनल, ये तो ऑब्वियसली वी नो इट्स वन ऑफ द क्रूशल डिलेड माइलस्टोन्स ऑफ ऑटिज्म, कि लैंग्वेज नहीं है, फेशियल एफेक्ट्स ज्यादा नहीं होते, दूसरों के इमोशंस रीड करने में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्टेड सेंसेस होते हैं, यानी कि एक वक्त में एक ही चीज कर सकते हैं, बहुत ही टनल विजन्ड, सिंगल टास्क ओरिएंटेड, एक वक्त में एक ही काम होगा. अगर ज्यादा दे दें या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे दें तो देन दे स्टार्ट टू स्ट्रगल. माइलस्टोन्स के अंदर यू विल नोट कि डिलेड सिटिंग, वॉकिंग, क्रॉलिंग, फाइन मोटर के अंदर मुश्किल थी. अब आई एम नॉट श्योर ज़ैनब के व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और मैं बिल्कुल इनवाइट करूंगी हमारी ऑडियंस को कि वो भी शेयर करें कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे. बट फॉर मी, ये बहुत sorry, I just, this is actually a funny thing, this is very important because आपने क्रॉल की बात की. हम तो खुश नहीं होते कि देखो ऑलरेडी चल रहा है. क्रॉल तो किया नहीं इसने, ये तो सीधा चल रहा है, चलना शुरू हो गया बच्चा. So true. This is what happened for us as well. यानी कि अयान जो है वो क्रॉल करने के बजाय सीधा started to walk. Like वो नहीं क्रूजिंग होती है, जब वॉकिंग करना शुरू ही कर दिया तो क्रॉलिंग की क्या जरूरत है? रॉन्ग. क्रॉलिंग की जरूरत है. द वे द ब्रेन डेवलप्स इज, अगर आप ये देखें कि हमारे बच्चों का, या हमारा भी, जब हम पैदा होते हैं, एक इन्फेंट का जो ब्रेन होता है वो डेवलप कैसे होता है? उसको बाहर से इनपुट चाहिए होती है टू रिसीव इट, ठीक है, और फिर वो ब्रेन उसको प्रोसेस करता है. उस प्रोसेस के थ्रू द ब्रेन डेवलप्स, थ्रू द टच, थ्रू द स्मेल, through the experience, through the feelings, the brain is developing. तो somewhere along the line जब हम अपने milestones miss करते हैं, हम बैठ नहीं रहे, या बैठ सही से पा नहीं रहे, या posture हमारा सही नहीं है, या ये कि हमने crawling की जगह walking शुरू कर दी. अच्छा, आपने ये भी देखा होगा ज़ैनब, और I see this on Instagram all the time, जिधर you know parents अपने बच्चों की cute crawling की videos बना के डाल रहे होते हैं कि वो you know ड्रैग कर रहे, एक टांग नीचे रख के. हाँ, तो even an OT will tell you कि right from there you can tell कि उनकी जो gross motor skills हैं उसकी planning में कुछ गड़बड़ है.
So when you see things like those, you know कि एक तो primitive reflexes present है, because that's a sure sign कि brain जो है वो सही से develop नहीं हो रहा. So obviously then we have yes, that's exactly right. Thanks, Selena, for that. तो एक मैंने जो है वो टिप रखी है for sticker test. ठीक है, sticker test के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बच्चों की, potentially younger बच्चों की self awareness कैसी है. So if you take a piece of sticker and you put it अपने बच्चे की forehead के ऊपर और फिर आप मिरर के सामने जाके खड़े हों, क्या वो स्टिकर अपने आप पर से उतारेगा या वो मिरर की तरफ जाके मिरर पर से स्टिकर उतारने की कोशिश करेगा? अगर वो अपने आप पर से स्टिकर उतारेगा तो सेल्फ अवेयरनेस इज देयर, सो दैट्स गुड, दैट्स व्हाट वी वांट. और अगर मिरर के ऊपर से जाके उतारने की कोशिश करेगा तो इट्स अ साइन कि सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और हो सकता है उनके दिमाग में उनको ये लग रहा हो कि ये तो कोई और है एंड लेट मी सी के यू नो इफ आई कैन रीच इन एंड मैं स्टिकर उतार सकूं. Batool, मैं ये दो questions हैं. I just want to I want to read them out loud for you. लेकिन उसमें मुझे एक question का तो answer, I think दोनों question के answer will be given आगे slide में जाके, but maybe because जैसे ही हम उधर पहुंचेंगे, so you can tell कि this is related to this, so they can find the connection between the two. Razia ने कहा है कि can you explain the relationship between primitive reflexes with memory cognition like dementia in later ages and muscular things like Parkinson? Great question, actually. Yeah. My child is walking, Madiha ne kaha, my child is walking, keeping his head tilted on the left side. What does that mean? Which side is more dominant and what problem that indicates and what should I do to correct it? So I think हम आगे जाके ये डिस्कस करेंगे. Yes, absolutely. I mean, ये तो हमारी तो अभी लाइफ की शुरू 10-15 मिनट के अंदर हम एक जिसे कहते हैं ना ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को. We are going to go into some details, लेकिन जो resources मैं शेयर करूंगी मदीहा, that will help you understand, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज से हम चेक नहीं करेंगे कि कौन सी साइड डोमिनेंट है. हम मल्टीपल चीजों के साथ चेक करेंगे कि डोमिनेंस किस एरिया में है, जिसे कहते हैं हम डोमिनेंस, यानी कि कौन सी साइड स्ट्रांग है, जिसका मतलब है कौन सी साइड डिफिशिएंट है. और हम हमेशा डिफिशिएंट साइड के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो डोमिनेंट साइड है वो बैलेंस हो जाए. क्योंकि कोई भी चीज अगर ओवर कॉम्पनसेट कर रही है, डोमिनेंट साइड आपकी डिफिशिएंट साइड को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है, तो आपको बच्चों के अंदर वो डिसबैलेंस ऑफ स्किल्स, लिमिटेशन दिखेगी. So we want to work on the deficient side. राजिया का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. So what happens is कि जब एज के साथ साथ ब्रेन की डिटोरिएशन शुरू हो जाती है तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सेट इन अगेन. अगर आप ब्रेन हेल्थ इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस, सिर्फ बच्चों की भी नहीं, बड़ों की भी, बल्कि हमारी भी. तो दैट इज पार्ट ऑफ योर ब्रेन हेल्थ. रिफ्लेक्सेस कम इनटू प्ले when the brain is not developing any further, it has grown stagnant and you're not staying on top of the brain health. इसके अंदर genetics का भी role होता है. Parkinson's, as we know, it can play into the genetic piece as well. मगर reflex integration एक ऐसी चीज है, and actually इस वजह से कहते हैं ना कि as you get older, you want to stay on top of अपने दोनों brain के हिस्सों को आप use करें. I've seen कि लोग crossword puzzle कर रहे होते हैं and things like that, you know. Brain की actually कोई बहुत comprehensive किस्म के games हैं, exercises हैं, physical भी, mental भी, that can keep your brain strong. मगर reflexes के लिए you have to do very specific exercises to recover from that. Okay, हम सब discuss करेंगे आज की presentation में, right? Not so much of Parkinson's, but yes, definitely autism. No, uska I do want to say one thing. I think and may I will मैं chat में लिख दूंगी उसका. So there's this doctor who thinks that autism is actually a childhood Alzheimer's disease, and there's so many connections. And also इसमें ये भी बात बहुत important है कि जब हम ये primitive reflexes की बात कर रहे हैं, तो जो ब्रेन डैमेज है, ब्रेन ट्रॉमा है, ये फंक्शनल न्यूरोलॉजी उसमें भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है. इसलिए मेरे ख्याल में बतूल ने शुरू में भी ADHD भी लिखा, ऑटिज्म भी लिखा और OCD भी लिखा. सो देयर इज लाइक ऑब्वियसली दिस हैज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड देयर सो मेनी. ये उस तरह है जैसे कि जिस तरह HBOT, जिस तरह हाइड्रोजन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है. सो जनरली व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ तो वो तो डिफरेंट था, वो तो एथलीट्स के लिए हीलिंग के लिए वो थी. बट वी सॉ द बेनिफिट्स ऑफ दैट
in autism treatment, and then it brought it together. So just like that, I think ye bhi primitive reflexes bhi jo hai, brain trauma, brain injury, and there's so many, and Alzheimer's and all these things, ye uske liye bhi bahut zyada useful hai. And I think bahut zyada data what abhi Batool ne jo piche study share ki hai, research study, which is very important because we connect it, because how it's connected to autism, because hum log jo hai wo autism को discuss करें, but definitely all this information is really really important and you can use it कहीं बहुत सी और जगहों पे भी. So functional neurology जिसे कहते हैं, मुझे पता है I'm throwing in some really strong words, ज़ैनब फिर मुझे बाद में डांटेंगी information इस्तेमाल की है, लेकिन functional neurology is the branch ज़ैनब जिसके अंडर आती हैं things like reflex integration है, या brain balance है जो कि दूसरा part है जिसके ऊपर हम बात करते हैं. तो that is called functional neurology. Functional neurology पहले chiropractic neurology कहलाया जाता था, because ये आपके traditional neurologist नहीं हैं जो कि इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं. In fact, likely traditional neurologist को तो पता भी नहीं होगा कि reflex integration है क्या या reflexes किसे कहते हैं. So this is primarily something that came through the chiropractic की science, and now it's developed to include things like all the brain developmental disorders or neurological disorders as well. अच्छा, एक चीज आपको मजे की पता है ज़ैनब, autism used to be classified before it became infantile autism. It used to be considered like schizophrenia as well, like back before in the 60s and the 70s, because उनको ये differentiation नहीं थी, क्योंकि autism के अंदर बच्चे इतने hallucinate करते थे. And I've had a chance to listen to so much about Dr. Bogner and even Dr. Melillo. I'll share his resources. कि उसके अंदर ये सुनने को पता चला कि ऑटिज्म के अंदर बच्चे कभी कभी इतने ज्यादा वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं कि वो ऑलमोस्ट हेलुसिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं. तो दैट इज आल्सो व्हाट इट वाज कॉल्ड. मगर फंक्शनल न्यूरोलॉजी की जो मेथोडोलॉजी है वो काफी सिंपल है, टू नॉट बोर द ऑडियंस टू मच. एक तो वो मेडिकेशन यूज नहीं करती एंड इट्स नॉन इन्वेसिव. तो इसका मतलब इट्स अ वेरी सेफ ऑप्शन. It's a safe option for anyone out there जो कि they don't want to rely on medication too much. इधर ADHD की जिधर बात आती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये ले लें मेडिकेशन, आप मेडिकेट करें, take that, SRIs, so on and so forth, and we don't want that for our children. So yep, and the rehabilitation consists of the visual, vestibular, proprioceptive, and ये सारे जो हमारे सिस्टम्स हैं हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं फॉर अ फुल ब्रेन हीलिंग. फुल ब्रेन हीलिंग के अंदर एज वी नो हमारा ऑटिज्म, अल्जाइमर्स, टुरेट्स, OCD, ADD, ADHD, ASD सब आता है. I think we have a few more questions. Yeah, actually ये question जो है, why autism is increasing, many people ask that the biomed or homeo can heal autism or not. They said many children improved with therapy. So what's the role of medical if child is learning cognitive skills? Please, I just want to say one sentence, a few words. And it's such a big question. We need a different, separate lives for that. Such a broad fact. Lekin I think this again. So आपको ये फील हुआ होगा कि शायद ये होगा कि बतूल जो है वो इसकी बात करती है, फिर अगले PRT की बात करती है, फिर इस हेनन की बात करती है, फिर हम लोग बात करते हैं डाइट की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं होम्योपैथी की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा अब आज जो है हम डिस्कस करें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. अगर ये सब कुछ ही हमें ये बता दें कि इनमें से करना कौन सा है. एंड एक्चुअली इसका आंसर एज अ मदर, ऑटिज्म मॉम, इज that there are so many ways to reach where you want to reach. These are all tools. You should use all of them. Yes, and autism is a spectrum, right? So every child has autism for different reasons, and there are different ways to help that. So what we are trying to do is, even in my own journey, what we are trying to do is to do it all, right? Yeah. Do it all. I mean, and actually it's not that, it might sound complicated, but it's not that difficult. And I always, वो हमेशा कोशिश ये जारी होती. अभी ये जिस तरह बतूल ने लास्ट स्लाइड पे हमें फंक्शनल न्यूरोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही थी और ये कायरोप्रैक्टिस से कनेक्शन एंड हाउ
आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट, अच्छा आप लाइव देख के जाएंगी और आप कहेंगी परसों मेरे न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है और मैं उससे ये क्वेश्चन पूछूंगी बिकॉज मुझे कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई, लेकिन एंड द न्यूरोलॉजिस्ट विल से कंप्लीटली ऑपोजिट. सो आई वांट टू स्टेट दिस थिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे कोई डिस्प्यूट नहीं है. न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ फैक्ट. It's a fact. आपके एग्जैक्टली, सो ब्रेन ट्रॉमा है या अंडर डेवलपमेंट है या डिस्कनेक्शन है. Everybody, mainstream neurologist, what everybody believes that the brain has the capacity to relearn, to make new connections, to actually improve. So neuroplasticity is there. This functional neurology that we are addressing here is one way to address that. Yeah. Is one way to improve that. This is the way that I felt, and Batool will explain how आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. बड़ी सिंपल इसकी एक्सरसाइजेस हैं और लोगों ने अमेजिंग results देखे. I'm here for an inspiration. I will share my own journey with you down in the line because it's like so I don't know if I answered your question, but I feel like कि ये सब चीजें जो है ना, they're all, it doesn't mean कि homeopathy doesn't work or maybe biomed छोड़ दें, ये करें, ये कि डाइट ना करें या ये कि शुगर देना शुरू कर दें. एक्चुअली इसके अंदर मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी. वो ये कि लोग क्या कहते हैं, मेरे नजदीक उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है कि लोग क्या कहते हैं. मैं हमेशा ये फॉलो करती हूँ कि एक तो साइंस क्या कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर डॉक्टर्स आर फॉलोइंग रिसर्च फ्रॉम द 80s और हमको पता है कि वो चीज अब नहीं चलती, सेंचुरी बदल चुकी है. तो डू योर ओन रिसर्च, एजुकेट योरसेल्फ. हर्ज क्या है, ठीक है ना, आपको लॉस क्या होगा, एट द मैक्सिमम आपको कुछ नए टेक्निक्स पता चलेंगे जो कि आप यूज कर सकते हो. पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी रिसोर्सेज की इतनी कमी है. यस, इट्स गेटिंग देयर, लेकिन स्टिल माइंडसेट बदलने में बड़ा वक्त लगेगा. सपोर्ट की कमी है, इंक्लूजन की कमी है. थेरेपीज वो एक ही टाइप की थेरेपीज बेशुमार मौजूद हैं. तो इफ यू लर्न थिंग्स, आप अपने बच्चे की भी हेल्प कर सकते हो, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो. सो देयर इज नो हार्म इन दैट, एब्सोल्युटली नो हार्म इन दैट. हालांकि ये जो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का डोमेन है, बट मेरी, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज. हाउ मेनी Canadians do you know who know about reflex integration? Exactly, यही मैं पॉइंट रेज करने लगी थी कि इवन आई फेल्ट इट, आई वेंट थ्रू इट माई सेल्फ कि मेरे बेटे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो सेंसरी इंटीग्रेशन जो है वो भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक डोमेन है, बट नॉट एवरी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज एन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट एज वेल. तो वो ढूंढने के लिए, अच्छा अब मैं किसी मेन स्ट्रीम क्लासिकल आम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के फिर जाऊंगा, वो कहेंगे नहीं 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 आप ये छोड़े. बट देयर आर सो मेनी एडवांसमेंट, ब्रश प्रोटोकॉल जो है, सो कुछ चीजें जो है जो उन्होंने बाय बुक पढ़ी है वो तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो अप टू डेट नहीं है. सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक, या इट्स अ स्ट्रगल ऑनेस्टली एवरीवेयर. फिर चीजें ये लगता है ना कभी कभी हमें कि हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं लेकिन हम 3 स्टेप पीछे हैं, या ये कि जिन चीजों में हम वर्क करना चाह रहे थे वो चीजें, वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह खड़ी हैं. अब जैसे मैंने वेरियस ब्रांचेस लिखी हुई, प्रोबेबली स्लाइड के अंदर मैं 4 चीजें और डाल सकती थी, मगर आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट इट एनी मोर. तो फंक्शनल न्यूरोलॉजी के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स और भी आते हैं. ओटी के अंदर डिपेंडिंग के ओटी किन चीजों में स्पेशलाइज कर रहा है, दैट कैन बी वन ऑफ दम. न्यूरोलॉजिकल रीऑर्गेनाइजेशन एक बेटी लुमॉन्ट की फील्ड है, तो वो भी उसमें काम कर रही होती हैं, वो भी रिफ्लेक्सेस के ऊपर काम कर चुकी हैं. लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, और ज़ैनब यू नो फर्स्ट टाइम आई स्पोक टू यू, तो हमारी एक्चुअली बात मिलिलो मेथड पर ही हुई थी. I know, I remember. इतनी लंबी गुफ्तगू हमने की थी. एंड द रीजन व्हाई आई सिलेक्टेड मिलिलो मेथड इज बिकॉज ये आप घर पर खुद कर सकते हैं. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स आउट देयर टू नो, क्योंकि आपका किसी दूसरे थेरेपिस्ट पर डिपेंडेंट नहीं है. आपने जाके कोई एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नहीं लेनी. एक किताब है, वीडियोस हैं, पढ़ें, कनेक्ट करें, सीखें, इस नॉलेज सेशन से सीखें, हमसे सवाल पूछें. आई नो दिस, ज़ैनब नो दिस, आई एम स्टडीइंग रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, बट एज अ पेरेंट तो आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, एंड यू कैन डू दिस योरसेल्फ एट होम. यू डोंट नीड एनीबॉडी एल्स. मेरा my first experience of primitive reflexes was actually with a kinesiologist. So this is also a word that you might want to search. It's like just a physiotherapist होते हैं
वैसे ही किनेसियोलॉजिस्ट होते हैं, और वो भी आपके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं, एंड देन दे इंटीग्रेट द रिफ्लेक्सेस. सो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट डोमेन्स आर यूजिंग दिस information. But like Batul said, and in the start हम लोगों ने इसको decide इसलिए किया क्योंकि we felt that the book has it all and you can actually. So the book that I'm talking about is Disconnected Kids. मैंने इसकी resources के अंदर डाली हुई है link. You can purchase it. इसका PDF भी available है. वो भी आप लोगों को मिल सकता है. And that's the book I have followed and I've seen gains with it. ठीक है, और ज़ैनब ने भी Melillo मेथड ही फॉलो किया हुआ है. We'll share personal experiences. और इसमें एक और भी, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी है. It's like a checklist that you can do and then you can score and then you can find it out कि आपका बच्चा जो है वो left है या right brain dominant है. So this is actually, so that was very helpful that you don't have to. It's in the book. So book has it all. Dr. Melillo should start. I mean, मेरे पास स्पेस की काफी कमी है. मैं जिधर रहती हूँ कनाडा में, I'm trying to stay close to services, right? आप इधर थोड़ा सा दूर चले जाएं तो आपके पास से सर्विसेज सारी चली जाती हैं, like speech and OT, ये सब नहीं रहता इतने करीब, बहुत मुश्किल हो जाती है. तो मेरे पास स्पेस बहुत मुख्तसर सी है. Well, I'm sure Zainab, you can relate to that as well. तो मगर कम स्पेस के अंदर बच्चों को एक्सरसाइजेस कराना कितना मुश्किल काम है. अब इंसान सोचे कि हम कहाँ लेके जाएं, कौन सा इक्विपमेंट रखें, घर में कोई सेंसरी रूम बनाएं. Well, equipment needed is very, very simple. Actually, equipment है ही नहीं. Most of the time जो मैं काम करती हूँ, एक पेंट ब्रश से करती हूँ. ठीक है, as you go through the advanced levels, आप उसमें tools and gadgets add कर सकते हैं if needed. लेकिन आपको एक पेंट ब्रश चाहिए, बॉडी ब्रश चाहिए जो शायद सभी के पास मौजूद है, एक एक्सरसाइज का मैट चाहिए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स रख लें. आप एसेंशियल ऑयल्स नहीं रखना चाहते तो छोटी छोटी जार्स के अंदर आप कुछ फ्रेग्रेंसेस डाल सकते हैं जिनको मैं मेंशन करूंगी अपनी स्लाइड्स के अंदर. टूथब्रश आप इलेक्ट्रिक ले लें ताकि यू गेट द वाइब्रेशन. म्यूजिक आप डाउनलोड कर लें. सॉफ्ट बॉल हर एक के पास होती है घर में. मिरर भी हर एक के पास रेडिली अवेलेबल होता है. पार्क में जाके आप पार्क का इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं. और साइड वॉक यूज कर लें आप, या आप जमीन के ऊपर भी एक लाइन खींच के स्ट्रेट वॉकिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द बैलेंस. ज्यादातर लोगों के पास ट्रैम्पोलिन मौजूद है, बट इफ यू डोंट हैव इट, नो प्रॉब्लम. और अगर आप बैलेंस बीम रख सकते हैं, ग्रेट. इफ नॉट, लाइक आई सेड, यू कैन यूज द स्ट्रेट लाइन. और इवन हमारे जो फुटपाथ होते हैं, साइड वॉक्स होती हैं, ट्रीज, कुछ भी, लाइक एनीथिंग दैट कैन हेल्प डू द स्ट्रेट वॉक would be helpful. Sorry, Batul, ये जो सॉफ्ट बॉल है, ये वो एक्सरसाइज बॉल की आप बात करें या हैंड वाला? हैंड स्क्वीजिंग वाला. हाँ, तो एक ट्रैम्पोलिन की बजाय आप वो बड़ा वाला एक्सरसाइज बॉल जो कॉमनली अवेलेबल है हर जगह, वो भी यूज कर सकते हैं. Absolutely. Yeah. Good point. Very good point. Yes, I can see that there are people mentioning mRNA. Yes, mRNA is another type that you can do. I selected Melillo method for the simple reason of its simplicity. Like I mentioned, there are other modalities out there. Feel free to research what is good for you. Okay, so equipment इधर हमारा काफी simple है जो हम use करेंगे. Benefits हमें क्या मिलते हैं उसके? Well, obviously we're working on strength in our children. हम अपने उनके gross motor पे काम कर रहे हैं, fine motor पे काम कर रहे हैं. And actually now you're beginning to see, Zainab, कि हम वो वाली चीजें जो ज्यादातर ओटी करते हैं, या हम ओटीज के पास भाग भाग के जाते हैं, या फिजियोस के पास कि अच्छा आप ये काम कर दें. हम 1 घंटे के पैसे देते हैं, उसमें आधे घंटे हमारा बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है और फिर हम वापस आ जाते हैं, एंड देन वी अचीव नथिंग. तो यू आर बिगिनिंग टू सी कि घर पे या एट होम प्रोग्राम करने का फायदा फिर क्या होता है. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट? Definitely, 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता. You have to do everything together, right? So मैं तो holistically, मैं तो पूरे सर्कल की बात करती हूँ. मैं कहती हूँ आप ओटी के पास भी लेके जाएं और फिर आप घर आके ये भी करें. So और दोनों को कंफ्यूज ना करें. उसको इसकी because maybe she has something that could be helpful, and then this is something that could also be helpful. So I think that you can do on top of it. Exactly. On the top of it, definitely. तो जो मुझे एक चीज और पसंद है वो ये कि पेरेंट्स को अगर पता हो कि उनको अपने बच्चों को एंगेज कैसे करना है या उनके साथ काम कैसे करना है, तो वो भी अपने आप को बहुत लाइट फील करते हैं, बिकॉज मैं देखती हूँ काफी वक्त
पेरेंट्स बड़े घबराए हुए होते हैं, हमें कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या करना है, प्लीज बता दें, प्लीज बता दें. तो एटलीस्ट नाउ यू हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक मैनुअल है, एक रेफरेंस है आपके पास, जिसके अगेंस्ट आप चेक करके एक्सरसाइजेस तो कर ही सकते हैं, राइट? यू कैन एटलीस्ट बिगिन. और एक्चुअली इसमें ये भी 9 years एक्चुअली मेरे बेटे को डायग्नोसिस को 9 years हो गए, एंड आई फील लाइक कि हम हमेशा ना शायद अंडरमाइन करते हैं सिंप्लिसिटी को. हम सोचते हैं ये सोल्यूशन इतना सिंपल नहीं हो सकता, हालांकि अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी सिंपल नहीं है सोल्यूशन की. वो सबसे मुश्किल काम है. लेकिन यही वाली बात है कि शायद आई थिंक आई वेंट थ्रू कॉम्प्लिकेटेड टू इट बीइंग वेरी इजी, देन इट बीइंग डिफिकल्ट, राइट? कि शुरू में आपको लगता है अच्छा ये क्या है, ये अभी रिफ्लेक्सेस के नाम जब बतूल बताएंगी तो हम भी सोचेंगे कि ये क्या है, लेकिन फिर आज जब हमें एक्सरसाइजेस बताएंगे हम कहेंगे अच्छा सिर्फ ये करना है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है. फिर हम जब करने लगेंगे फिर हम कहेंगे ओहो बच्चा तो सुन नहीं रहा. Exactly. Actually, Zainab, I was speaking to you about this yesterday कि अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं अपने जर्नीज में, आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है रिलेट कर सकती हैं कि अगर हमें कोई आसान चीज इंसान बता देना तो हम घबरा जाते हैं, ये इतना इजी है तो ये तो सही, ये तो इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज इट्स टू इजी. आप ट्राई तो करें, यू नो, एंड मोर देन दैट आपको एक मौका मिलता है, एक और जिसे कहते हैं पेरेंट्स की टूल बेल्ट है, आपने उसके अंदर एक टूल और ऐड कर दिया है. बच्चों का फाइन मोटर और ग्रोस मोटर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट. मैंने आई एम श्योर द स्लाइड्स में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए मैं वक्त से पहले नहीं बोलना चाहती, लेकिन जितना कोऑर्डिनेटेड आपका ब्रेन है उतनी कोऑर्डिनेटेड आपकी बॉडीज हैं. अगर आपकी यू नो फाइन मोटर इज नॉट स्ट्रांग, बच्चे का ग्रोस मोटर इज नॉट स्ट्रांग, तो वो स्पीच कैसे डेवलप होगी? स्पीच के अंदर तो ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं. तो यू आर हेल्पिंग नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट. ये सिर्फ ये नहीं कि आप राइटिंग पे काम कर रहे हैं, आप ब्रेन की उस कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हैं जिससे राइटिंग इंप्रूव होती है, एंड दैट्स फाइन मोटर, दैट्स ह्यूज. ऑब्वियसली उसमें हमारी एकेडमिक्स भी इंप्रूव होती हैं. तो ये मिलीलो मेथड के या रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन या ब्रेन बैलेंस टाइप की जो मोडालिटीज हैं ये उनके बेनिफिट्स हैं. सोशल स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं इसके अंदर. वी आर गोना टॉक अबाउट इट इन जस्ट अ मिनट. द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, अच्छा एक्चुअली इसके अंदर मैंने ये जो यूज हो रहे हैं जिस तरीके से या जिस तरीके से होना चाहिए है इन सेंटर्स, इन थेरेपीज, इन फिजियोज, इन कायरोज एंड ओटी, तो वो ये एक स्नैपशॉट है. इसके अंदर अगर आप देखें तो देर नॉट सुपर हैवी ऑन इक्विपमेंट, या आप कभी जब बहुत एडवांस लेवल्स पे चले जाएं तो यस यू विल बी यूजिंग रेड लाइट्स, लेजर लाइट्स, लेकिन फॉर मोस्ट पार्ट यू नीड वेरी सिंपल इक्विपमेंट. कोई रीजन नहीं है कि वी शुडंट हैव मोर ऑफ दीज सेंटर्स you know in our regions. So that's what I wanted to share कि it's not कि नहीं जी ये तो बाहर के मुल्कों में ही हो सकता है, यहाँ पे तो मिल नहीं सकता. It's not और बिल्कुल, और ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव हर्ड, जैसा डॉक्टर मलीलो ही सेज दैट, डॉक्टर काइल डेगल के उस दिन मैं देख रही थी और उसने भी कहा कि अगर रेजिमैक्स एक इट्स अ ग्रेट अमेजिंग टूल, इट हैज फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, तो उसने कहा कि अगर आपके पास वो नहीं है तो आप हैंड हेल्ड मसाजर जो हर जगह मिल रहा है, हर जगह हर फार्मेसी से मिल रहा है, आप उसको यूज करिए. सो इट्स लाइक दिस दैट, एंड आई डू फील दैट कि फिर इसलिए आप लोग इसीलिए हम लोग बार बार बुक को करें, क्योंकि अगेन मैं और बतूल बात कर रहे थे, एंड आई सेड टू हर दैट कि ये बुक इज, आई लाइक दिस टॉपिक बिकॉज we have the solution. It's like this, it's very simple, it's like something जो कि हर कोई कर सकता है. उसमें आपको यहाँ से ये चीज नहीं चाहिए, वहां से वो चीज नहीं चाहिए. whatever you have available, मैट नहीं है तो कारपेट के ऊपर कर लें, सॉफ्ट कारपेट के ऊपर यूज वो कर लें. you don't really need a mat. Make it comfortable on your own knees, Zainab. मैट तो हमारे लिए. एग्जैक्टली, आई नो. तो वो जो मेरा वो जिम एक्सरसाइज बॉल है, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है. तो जब वो हम लोग, तो वो कभी ऊपर ले आता है, कभी नीचे ले आता है, वो हर जगह साथ लेके जा रहा होता है. तो कभी हम लोग के गेस्ट आए हो ना, तो हमेशा कहती है अच्छा ये तुम्हारा एक्सरसाइज बॉल. में इतनी हंसी आती है. कहती मेरा यही है ये. इसी तरह मैट भी बड़ी अच्छा इंप्रेशन है, लोग समझेंगे आप बहुत अच्छी, बहुत फिट हैं आप. फिट है. और that's hilarious. अच्छा, तो ये मैंने एक वाइट पेपर भी यहाँ पे ऐड किया है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर सकती हूँ. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरैक्टिव मेट्रोनोम. मेट्रोनोम एक ऐप है
वो भी एक पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन में आप यूज कर सकते हैं. इट्स अनदर टूल that you can use. जरूरी नहीं है कि वो ही होना जरूरी है. You don't have to particularly use it. लेकिन अगर आप यूज करें तो उसके भी बेनिफिट्स हैं. मगर the reason why I attached this paper was because it's talking about the fact कि brain balance की exercises की वजह से ADHD के symptoms improve हुए without medication. So I think that is powerful. This goes beyond biomedical. It goes beyond just nutrition. We're talking about brain now. So I think that's definitely a very empowering tool for parents. Batool, a question hai Razkia ka, if a child has seizures or tics history, can they use these exercises and massagers? Seizures के लिए massagers आप body पे तो use कर सकते हैं, but not around the top of the, your top area. मैं इसके अंदर मेडिकल आपको तो नहीं फैक्ट बता सकती. आई थिंक यू शुड प्रॉब्ली चेक दैट. लेकिन you don't have to use vibration if you are worried about this. आप joint massages, body brushing, बॉडी को जो फीडबैक चाहिए वो आप डिफरेंट तरीकों से भी दे सकते हैं. और मेरा ये भी एक ख्याल है कि जिस तरह मैंने रेजिमैक्स का जिक्र किया, मैं उसकी बात नहीं करी. जिस तरह हैंड हेल्ड मसाजर होते हैं, ये सिंपल, या जिस तरह इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है, इसकी वाइब्रेशन बड़ी बेसिक होती है. इट डजंट, ये इन्वेसिव थेरेपी नहीं है. No. So it should not have any difference, any bad side effects on seizure or tics. I think it should be, it's like exercises. We will discuss it. तो आप देखेंगे कि जो है वो, और I feel that कि कोई भी ऐसे लेवल की एक्सरसाइज नहीं है जिस तरह आपकी टांगों में कुछ लोगों को क्रैम्प्स पड़ते हैं या कुछ, तो डॉक्टर उनको कहते हैं आप वॉक करें. हालांकि बंदा कहता है नहीं मैं वॉक नहीं कर सकती, but that's the reason. So exercise itself, and I think that's why we like it so much, that this is such a powerful tool while it being so simple. So yeah. I don't think that this could cause, yes, आप क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस जो है आपकी लिम्फ नोड ड्रेनेज करती हैं, तो आपको कोई ये हो सकता है कि मे बी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो आपको कुछ थोड़े बहुत रिएक्शन हो सकते हैं. फिर बच्चा जो है वैसे रूटीन से तंग हो या वैसे कोऑपरेटिव ना हो, वो ना चाहता हो, थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो, इज इन लाइक, उस वजह से अगर आप कोई रिएक्शन देखेंगे वो पॉसिबिलिटी है. लेकिन बिकॉज दिस थेरेपी इज ऑल एक्सरसाइज बेस्ड, it has no bad effects on the body. Personally, I completely, this is what I think. Resimax के लिए मैंने डॉक्टर शारिक का जो सुना था वेबिनार, उसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर उठाया था कि जी सीजर्स तो नहीं, उनका वाइब्रेटिंग टूल इज मेडिकल ग्रेड, तो इट्स वेरी पावरफुल. But he actually said कि as long as you're not using it orally or around the ears, you should be okay with that. So that was his recommendation. Magar that's a pretty powerful tool. Vibrating plates मौजूद हैं. I think पाकिस्तान में भी होंगी. Most of the exercise equipment है वो, हाँ. Yeah. So जो अभी मेरे पास मैंने 3-step solution लिखा हुआ है, वो ये कि डॉक्टर मलीलो का मानना ये है कि अगर आप रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करें, कोर पे काम करें, क्योंकि हमारे बच्चों का कोर बहुत वीक होता है. अब एक्चुअली मेरे उस दिन अपने हस्बैंड से इस मौजू के ऊपर बात हुई, तो ही सेड नहीं, हमारे बच्चे का कोर वीक नहीं है, वो तो स्कूटर चला सकता है, वो साइकिलिंग कर सकता है. बट आई हैव नोटिस्ड कि अयान के अंदर देयर इज अ टेंडेंसी टू फ्लॉप, थोड़ा फ्लॉपी है मसल्स. दैट मींस कि कोर कैन बी स्ट्रॉन्गर, right? And age appropriately, it's not strong enough. So there is that gross motor delay that we're still dealing with as well. Zainab, you'll share your experiences in a bit. लेकिन अगर आप रिफ्लेक्सेस के ऊपर वर्क करें, आप अपने बच्चों का कोर स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप ब्रेन को बैलेंस करें, when I'm talking about brain balance, the right brain versus the left brain, there you have a child जिसके ब्रेन को के डेवलपमेंट की आपने ऑब्स्टिकल्स हटा दिए. Now the brain is free to develop. तो जो भी hindrances थे, जो obstacles थे with the primitive reflexes and poor body coordination, आपने वो improve कर दी, and now you have a balanced mind. और जिसे कहते हैं ना brain immaturity, now it's going towards maturity. Zainab, what did you see in terms of fine motor and gross motor? Because like I shared my experience. So actually this is very interesting topic for me, because we never had any of these difficulties growing up, right? He was a great crawler. He reached his milestones
एग्जैक्टली ऑन टाइम, समटाइम्स अर्लियर, बहुत ज्यादा। और वो मतलब वो बाइक चलाता है और वो इतना परफेक्ट बैलेंस है। और मुझे ये बात शुरू शुरू में नोटिस होती थी कि हमारे घर में लोग आते थे तो वो परफेक्टली बैलेंस कर रहा होता था सोफे के ऊपर, ऊपर नीचे या इस तरह ना, तो लोग डर रहे होते थे कि इसको डर नहीं लगता गिर जाएगा, चोट लगेगी ना, लाइक ये कभी नहीं गिरा। एंड देन आई वाज थिंकिंग दैट दिस इज एक्चुअली वन ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एंड एक्चुअली इट Yes. इज। Yeah. लेकिन इसमें मैं दोबारा एक बात कहना चाहूंगी कि वाइल जब मैंने ये रिफ्लेक्सेस को शुरू में पढ़ा तो मैंने सोचा कि इसके तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बड़ा, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जिस तरह वो बात करते हैं ना कि आपका वो जो एक आप करोगी डिस्कस वो ASTNR Yes. रिफ्लेक्स जो है, Yeah. तो वो बच्चा जो है जब आप उसको रेटल दिखा रहे होते हैं या कोई भी चीज देते हैं और वो जो है ना उसको देखता है और वो पकड़ने की कोशिश करता है, तो सारे as a general happy family, everybody was like, yay, he did it. And actually, and I was like, ab mujhe, after so many years and understanding the science behind it, and I was like, actually ये टाइम है सेलिब्रेशन का, ये वाकई ही सेलिब्रेशन का वक्त है, बिकॉज उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। सो Yeah. हमारे लिए बहुत ज्यादा था। लेकिन जब मैंने ये रिफ्लेक्सेस इन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को देखना और रिटेन रिफ्लेक्सेस की हम बात करेंगे, तो उसमें फिर पता चला कि एक्चुअली यस मे बी ये जो मेजर चीजें थी, ये मुझे था कि नहीं नहीं ये तो मसला नहीं है, क्योंकि मुझे ये फील नहीं हुई कॉमन जो आप लोग बात करते हैं। लेकिन फिर देन देयर वाज द फियर पैरालिसिस, आई थिंक वो कौन सा रिफ्लेक्स है Yeah, जो नहीं, उसमें। I'll share that because Zainab, you said ना कि gross motor skills बहुत अच्छी थी आपके बेटे की. So बिल्कुल remember I was telling you the other day to look into left brain dominance, and that's coming up in the next slide because हमारे बच्चे जो left side dominant हैं, उनकी gross motor skills काफी अच्छी हैं, उनकी fine motor थोड़ी weak है. तो बिल्कुल। let's keep going. मैंने I think काफी सारी slides बनाई हैं, but to talk about the primitive reflexes, अब ये reflexes के नाम हैं, ये टेक्निकल हैं, लेकिन इसके ऊपर इतनी वीडियोस मौजूद हैं, and a couple of them I've linked books as well in the end. आपके पास images मौजूद हैं, graphs मौजूद हैं, videos मौजूद हैं, तो आप इन लफ्जों से ना घबराएं, आप इनकी मीनिंग समझने की कोशिश करें कि ये मीनिंग्स क्या हैं. तो मोरो रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो आपका प्रिमिटिव फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है. वो Sorry, Batul, before that, ये chat में एक Alina shared excellent thing. It helps with the synaptic pruning, so it's not harmful in case of seizures. In fact, और फिर मदीहा ने पूछा है कि साइनेप्टिक प्रूनिंग होती क्या है, और वो जिस तरह जो टीनेजर्स जब एडल्ट्स में चेंज होते हैं, सो दिस इज अ पर्सनैलिटी शिफ्ट विच इज natural behavior. And I think this is interesting connection to that. In normal, and Alina explained it as well, in normal people, brain automatically sheds unused pathway. I think ये part of personality build up भी बड़ा अच्छा है, sympathize करना, understand. So this is also an important, I think this is an interesting discussion as well. Hopefully we'll be able to connect. So because I think now we are starting with the major part of this. Well, yeah, because now we're going in the technical gist of it, जिसको अब हम avoid नहीं कर सकते. We have explained the major concepts. We've explained कि ये philosophy क्या है, rather science क्या है, और इसके ऊपर evidence क्या है, research क्या है. Now we're going in the thick of it. तो motor reflex हमारे reflexes होते हैं. अगर आप एक नजर इस चार्ट पे डालें ज़ैनब, तो आपको common denominator क्या नजर आता है? Most of the reflexes हमारे बच्चों में should integrate by 1 year. So like by the time they turn 12 months old, they should all ideally be gone, save एक reflex के. मगर that is not the case. अयान के अंदर, जैसे मेरे बेटे में आज के दिन भी rooting reflex है. तो rooting reflex क्या है और motor reflex क्या है? तो motor reflex is your startle reflex that we were talking about. हाँ, ये मैं वो बात कर रही थी कि ये मोरो रिफ्लेक्स इज द वन जो स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है. तो बाकी सारी, बिकॉज आई वाज सो कंसंट्रेटिंग ऑन द रेस्ट ऑफ देम एंड थिंकिंग कि नहीं नहीं इसके तो सब ठीक है, बट वी वर एक्चुअली डीलिंग विद अ रिटेन्ड का मतलब है अनसॉल्व्ड, या स्टिल ही स्टिल हैव इट व्हाइल ही शुड नॉट हैव इट, मतलब खत्म हो जाना चाहिए था उसकी 4 months में, और वो तो अभी तक we are still. You missed asking $1 million question. What is primitive reflexes? तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं क्या? मुझे तो पहले शुरू में इस चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो चीजें होती हैं जो हमारे बच्चे, ऑब्वियसली नॉट सिर्फ हमारे बच्चे, इवन हम भी, जब इंसान का बच्चा पैदा होता है
तो ऑब्वियसली ब्रेन की डेवलपमेंट तो नहीं होती। तो कुदरती तौर के ऊपर, जिसको प्रिमिटिव कहते हैं, कुदरती तौर के ऊपर खुदा ने हमें ये रिफ्लेक्सेस बनाए हुए हैं कि वो उनके ऊपर इख्तियार नहीं है हमारा। दे जस्ट किक इन प्रिमिटिवली, दे किक इन रिफ्लेक्सिवली, उनको हम रिफ्लेक्स कहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम सोने के लिए लिटा रहे होते हैं, कभी बहुत जल्दी से उनको अगर झुकाएं तो दे इमीडिएटली पुट देयर हैंड्स अप ना, वो उसको स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। या ये कि अगर आप उनको फीड करने के लिए जा रहे हैं, बॉटल आप उनके चीक के ऊपर यू स्ट्रोक करते हैं, दे ट्राई एंड टर्न द फेस टुवर्ड्स इट, ये रूटिंग बड़ा वो क्यूट लगता है ना, आप फिंगर लेके जाते हो, वो फिंगर पे सक है immediately like the, and that's a rooting reflex। ये उनको सिखाया नहीं गया है, ये उनका एक बॉडी का, उनके ब्रेन का एक बड़ा नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ये हर इंसान के बच्चे में ये चीज होगी, मगर ये रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये रहती है तब इश्यूज होते हैं। लेकिन लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दीज रिफ्लेक्सेस। देन वी हैव द पामर रिफ्लेक्स। सो वेट, या पामर, तो उसके अंदर अगर आप हमारे छोटे बच्चों का हाथ जब स्ट्रोक करते हैं तो दे इमीडिएटली क्लोज अराउंड दिस, राइट? तो ये पामर रिफ्लेक्स होता है। अब ऐसे ही बिबिंस्की भी है जो मुझसे मिस हो गया, लेकिन अगर आप बच्चों के पैरों के ऊपर स्ट्रोक करें, उनकी हील टू टो, तो उनका पैर फ्लेक्स करता है। हाँ, इसको प्लांटर रिफ्लेक्स भी कहते हैं ना, बिबिंस्की एंड प्लांटर इज द सेम। एग्जैक्टली। देन यू हैव योर ATNR। अब इसके इन सारे रिफ्लेक्सेस के नाम तो मौजूद हैं, लेकिन ये ऑटिज्म में कैसे इम्पैक्ट करते हैं? अगर तो ये रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट ना हो, राइट, और वो बच्चे में रह जाए पास्ट 1 ईयर, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं। इट्स लाइक, थिंक ऑफ इट दिस वे, आपके ब्रेन को 1 साल के बाद इन रिफ्लेक्सेस की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ आप चल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यू ग्रोइंग एंड यू डेवलपिंग, आपको इन रिफ्लेक्सेस की जरूरत नहीं है। तो जब वो रिफ्लेक्सेस रहते हैं, इट्स लाइक आपका कंप्यूटर का CPU है, उसके अंदर आपने बहुत मेमोरी के अंदर चीजें डाल दी हैं, स्लो हो जाता है, राइट, इट कैन नॉट परफॉर्म। तो हमारे ब्रेन्स फिर अंडर परफॉर्म करने लगते हैं, इमेच्योर हो जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट डिलेड हो जाती है। तो integrating primitive reflexes then frees up all that space to, you know, learn new skills and develop freely. ये बिल्कुल, and actually what Dr. Melillo he says very interesting things. He said कि हम लोग start पे ही, we are stuck in the start, right, and we keep doing all these big things while we are trying to, like, it's like I'm fixing the last thing first. और I just want to add इसमें कि जो brain development है वो 7 steps की होती है। जो first step है वो primitive reflexes, जो second step है वो core and balance है, जो थर्ड स्टेप है वो आपकी गेट होती है, जिस तरह आप गेट, द फोर्थ स्टेप इज फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें बच्चा आप स्पून से खाना शुरू करते हैं, स्पून बल्कि छोड़े, वो हाथ में पकड़ के, जिस तरह वो वीनिंग होती है, बेबी लेड वीनिंग जो कि आप कहते हैं उसको, फिर आपकी स्पीच डेवलप होती है, और फिर आपकी आई मूवमेंट डेवलप होती है, बिकॉज एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, विच वी डोंट रियलाइज, बट आई मूवमेंट is later before the speech पहले है, और फिर आई मूवमेंट है, और फिर cognition है। So अगर आप first step पे ही you're stuck on the first step, and because we have so many reflexes, so some of the kids are not, like, it depends on the individual case कि आप कौन से वाले primitive reflex पे stuck है ना, क्योंकि जो जिन पे नहीं है वो तो improvement step by step जा रही है, लेकिन जिस पे आप stuck हैं, then you would see deficiency in that area, and that is why we have so many. जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो मोरो रिफ्लेक्स है, स्टार्टर रिफ्लेक्स है, और ये एंजाइटी से भी हम वो कर रहे थे, ये फाइट एंड फ्लाइट मोड से भी कनेक्ट करते हैं। सो इट्स लाइक, एंड ये जेनेटिक म्यूटेशन भी है, सो ऑल दिस इज सो connected that if you have a predisposed genetic mutation, you will have a fight and flight, you will be in fight and flight mode, right? But then if you on the top of that, if you also have a retained moro reflex, it will make things worse. So as solving solving or integrating the moro reflex will bring you improvement to some extent, but it cannot change your genes, and that's why we have to bring this together with the biomed, and that's why we discuss all segments, all parts of it, all modalities of actually treating or improving a child with autism. So this is why I wanted to bring it all together to
for myself more than anyone else. मुझे लगता है मैं खुद You're right. I mean, it's such a vast concept. इतनी vast science है इसके पीछे. अगर इंसान इस गहराई में उतरना शुरू करे, I mean, it's unbelievable. The research backs it up. लेकिन इसके अंदर मैं ये बताती चलूँ कि हमारे बच्चों पे ये चीजें कैसे अप्लाई होती हैं. जैसे कि मैंने ग्रुप पे बहुत दफा सुना है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी यूजुअली हमारा बच्चा सही होता है, लेकिन जैसे ही कोई आता है, कोई नया बंदा आता है घर पे, गेस्ट आते हैं, तो दे एक्ट आउट नहीं है, वो उनका स्टार्टल रिफ्लेक्स है. नई जगह से, नए लोगों से घबरा के इट फ्लेयर्स अप देयर स्टार्टल रिफ्लेक्स. तो ये जो वीक मसल्स होते हैं, ये ड्रिबलिंग हो रही होती है, ये भी किसी रिफ्लेक्स, ये कौन से वाले प्रिमिटिव रिफ्लेक्स से रिलेटेड होती है? तो ड्रिबलिंग जो है दैट्स ओरल मोटर, सो दैट्स योर रूटिंग रिफ्लेक्स. इसका मतलब है कि आपका रूटिंग रिफ्लेक्स से कनेक्टेड है, मगर इट्स शोइंग ओरल मोटर वीकनेस. सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं, मोटर शोइंग कि पूरा ओरल मोटर आपका वीक है, व्हिच मींस ओरल मोटर आल्सो टाइज इनटू योर ब्रेन्स मोटर स्किल्स. So, but working on the rooting reflex will improve that. So you'll work on the rooting reflex to integrate that, and uske baad you will work on strengthening your oral motor. Jiski exercises like blowing and sucking and different exercises, wo aap OT ke sath kar sakte hain, lekin aapne reflex pehle integrate karna hai in order for the thing to develop, warna oral motor develop nahi hoga. Actually, that is the reason कि oral motor develop नहीं हो रहा, is because कि वो reflex की वजह से है. So that's the thing. इसके अलावा अगर आप देखें, मैंने जैसे कि मेरे घर में एक पेट है, राइट? तो every time the pet कोई आवाज ज्यादा जोर से निकालता है, तो मेरा बेटा घबरा जाता है, immediately see that startle reflex come up. So, and I've been working on it. मगर these are the different ways you can see कि हमारे बच्चों को anxiety होती है, and they're not basically वो पे घबरा जाते हैं, तो मगर उसका reason है, और आप उन reflexes को अगर integrate करें तो you will see the improvement. Now the same thing with the eye tracking, right? Like you gave a pretty good example. इसके अंदर भी मैंने strabismus के बारे में, जो lazy eye जिसे कहते हैं कि आंखें coordinated नहीं है, तो we should be able to track our eye, like eye tracking honi chahiye left to right. We should be able to follow this. अगर वो नहीं कर रहे, अगर आपकी आंखें बीच में इधर जंप करने लगती हैं बच्चे की ट्रैक के दौरान, that means कि उधर आंखों का जो है वो vision is not developed yet. तो वो उसके अंदर आपको फिर इस चीज के ऊपर वर्क करने की पहले जरूरत है, बजाय इसके कि आप रीडिंग पे काम करें. तो बच्चा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. You're like, ये तो पढ़ता नहीं है, रीडिंग नहीं कर सकता, is dyslexic. But take a look at the eye tracking. Maybe that is weak. Yeah. Right? Okay. तो आप ये exercises भी explain करोगी? Yes, to a certain degree, because इसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो किताब में हैं. जो उनकी सबसे ज्यादा हर एक्सरसाइज को, हर रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने की जो एक्सरसाइज है वो किताब के अंदर लिस्टेड है. तो इसके अंदर बहुत सारी रिफ्लेक्सेस को पहले आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन यू फाइंड कि हाँ नहीं बच्चे में रिटेन्ड मौजूद है, यस इट इज ट्रू, दे हैव इट, देन यू विल फटीग द रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने का वही तरीका होता है जिससे आप टेस्ट करते हैं. एक्चुअली मुझे ये कॉन्सेप्ट समझने में शुरू में पहले वक्त लगा था. मैंने कहा टेस्ट तो मैंने कर लिया, अब मैं इंटीग्रेट कैसे करूं? एग्जैक्टली, सॉल्यूशन बताएं. इट्स द सेम मेथड. जिस तरीके से आप टेस्ट करते हैं वही तरीके से आप फटीग करेंगे. तो इफ आई एम टेस्टिंग एंड दिस इज रूटिंग, तो मेरा इंटीग्रेट करने का तरीका भी यही है. अब मैं फिर कुछ डिफरेंट नहीं कर रही, राइट? बट देन आई एम गोना यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रेशर. मैं डिफरेंट प्रेशर यूज करूंगी, डिफरेंट टूल्स यूज कर सकती हूँ. मैं अभी पेंट ब्रश से कर रही हूँ, मे बी आई स्टार्ट वर्किंग विद अ पेंसिल लेटर. कुछ बच्चे जो बहुत सेंसिटिव हैं, लाइक कुछ पेरेंट्स जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ अपनी कोचिंग में, दे टॉक्ड अबाउट कि नहीं वो तो पेंट ब्रश भी नहीं यूज करने के लिए मुझे. यूज अ फिंगर, desensitize them, simplify things. ये substitutions और ये creativity parent को खुद ही लेके आनी है. Do we have any questions? Question, yes. Alina asked, just curious, can primitive reflexes be another cause of tics? They can be. Tourette's is very much linked to, is very much linked to, actually Tourette's के ऊपर पूरा डॉक्टर मलीलो का एक वो है मॉड्यूल है जिसको मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया. I have only finished one module. लेकिन working on that, Alina, stay tuned in. लेकिन yes,
that there is, and if you read the book, उसके अंदर भी उन्होंने टूरेट्स के ऊपर बात की है. क्योंकि टूरेट्स और टिक्स जो है दोनों जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना. So although we talk so much about gut and brain connection, and we talk about so many other things, but these things are very different. These are very nervous system related things, and when you address the neuroplasticity, the connection, all these things should definitely improve. But yeah, go ahead. Sorry. The thing that I wanted to emphasize over here is that body and brain are codependent. Zainab will be like, I mean, that's stating the obvious. Kya baat kar rahi hain? Actually, it is, because body and brain are codependent. Agar aapki brain is immature, तो आपके body के functions cannot be, streamlined, cannot be coordinated. अगर आपकी body uncoordinated है, तो आपकी brain और उसकी motor planning और executive functioning skills will not be strong. So there is a codependency जो दोनों में है. और फिर ये भी है ना, इवन जब आप जिस तरह टिक्स की बात करें तो वोकल टिक्स होती हैं, विजुअल टिक्स होती हैं, एंड देयर इज लाइक मोटर टिक्स हैं. सो इट्स लाइक there are so many different parts of the body. If you try to fix, like अगर flow आपका बेहतर होगा, improve होगा, जिस तरह जब आप ये address कर रहे होते हैं primitive reflexes को, so it's not like you're trying to connect the right brain and the left brain, improve their connection and address the deficiencies, right? And you do it through your body, and in between it addresses that neurons that are sending signals to your mind. And actually, हालांकि ये हमारा domain है नहीं, I don't want to talk very extensively in this, because obviously a neurologist would be somebody who would, but हमारा डोमेन ऑटिज्म जरूर है और हमारे बच्चे जरूर है. एंड दैट्स व्हाई मैं कभी कभार ये भी सोचती हूँ कि आई डू लाइक नोइंग द साइंस बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर आवर किड्स, बट आई लाइक seeing the results more, and these things bring results. So actually जो अलीना ने सवाल पूछा, because Tourette's or tics, so again it just falls down into, इसलिए I've brought up the slide of the brain again, कि अगर आप ये देखें कि किधर कौन से फीचर्स लिफ्ट करते हैं हमारे ब्रेन में, then you will be able to, obviously इसके अंदर you will have to dive deeper कि टिक्स भी इन एरिया में कहीं पे होती हैं. टिक्स actually come because of either the underdevelopment of a certain area or an impairment of a certain area. ठीक है ना. हमारे बच्चों के ब्रेन्स, अगर आप ब्रेन को देखेंगे तो you will see कि उनकी structurally brain is not, it stands out from a neurotypical brain as well, right? Yeah, but that's important to know that कि वो अगर आपने जिस जो ब्रेन को देखने की बात बतूल करनी है, वो एक MRI नहीं है, because जो MRI based आपकी results होते हैं, I don't know, but most of the kids, they would have a perfectly normal MRI. This is the QEEG mapping. This is the one where you would map the connection. You would see that how brain is connected. So this is what will you show. मैं बार बार इस वजह से इस चीज को emphasize करती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत से लोग जो so many mothers over the years, मुझे खुद support group को करते, like I've been supporting parents for so long, मुझे इस बात का एहसास है कि कई दफा ना आप you learn something and then you go and you ask somebody else, and because they don't know, they just distract you from it, and then you let it go, and then you were like, अच्छा फिर 3 साल बाद आपको होता है, ओह अच्छा उस वक्त मैंने इस चीज को पढ़ा था, मैंने ये बुक पढ़ी थी, लेकिन मैं उसके पास गई या उसके पास. So always remember, first do your own research. कोई भी चीज इधर जो सारी बात बतूल करी, I'm sure you can Google, I'm sure you read the book. Book is your go-to, and if you need help, obviously we are here. लेकिन always be informed that who are you asking the question to, right? आप मैं और फिर ये भी मैं अगर आप एक ऑटिज्म पेरेंट न्यूरोलॉजिस्ट से पूछेंगे ना, उसके आंसर बड़े डिफरेंट होंगे. ओह एब्सोल्युटली. लेकिन मगर मैं ये बात भी आइडेंटिफाई करती जाऊं कि हम सिर्फ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे, आज हम ब्रेन बैलेंस की भी बात कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अगर ब्रेन हमारा कनेक्टेड नहीं है, and reflex integration is part of that puzzle. Remember मैं ये दिखाती हूं फिर से, मैंने एक चार्ट बनाया था कि we have 3 steps हैं. We have your reflex integration, आपको अपनी core develop करनी है बच्चों की, and then you are working on the brain balancing.
अगर आपकी हेमिस्फेरिक डिस्कनेक्शन मौजूद है, अगर आपका ब्रेन वो जो एरियाज अभी मैंने सारे दिखाए उनमें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, there will be tics, there will be delays, there will be excessive repetitive behaviors, there will be जिसे कहते हैं कि ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज निकल के आने लगती हैं, एंड यू गो लाइक ये तो बहुत डिफरेंट सी कोई चीज है. सो yes, this is the one that I was talking about. तो हम and actually that's the reason why मुझे किसी ने किताब के बारे में पूछा. हाँ, मैं ये पूछना चाहती, किताब है डिस्कनेक्टेड किड्स बाय डॉक्टर रॉबर्ट मिलिलो. और आई टोटली एग्री अलीना, मैं न्यूरोलॉजिस्ट से मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पे भी मैं एक अलग लाइफ कर सकती हूँ. Oh my God, बुरे अच्छे नहीं, right? This is not just Pakistan. I spoke to neurologists in Canada and it was so disappointing. And I actually, this is the third country. I was like, I went to Malaysia and I went to Dubai. We were in Dubai for so long. और मैंने कितने neurologists, बल्कि एक neurologist को वो मुझे हंसी आती है. He follows me on Instagram and I follow him and he's now a big name on Instagram. And I'm like, oh my God. Although he's a neurologist and he was like, and I know, but मुझे उसमें मसला उसकी इंफॉर्मेशन पे नहीं है. मुझे उसका मसला, मैं सोची थी इंस्टाग्राम पे तो इतनी अच्छी बातें करता है, जब आप एज अ पेरेंट उधर गए थे तो वो कह रहा था ये तो बिल्कुल नहीं है. बट बिकॉज पीपल आर जस्ट लाइक over the years now they want to, he has learned, I think he has improved over the years. तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करना पसंद करते हैं और कुछ लोग हैं वो बिल्कुल क्लासिक उसी में रहते हैं और चेंज नहीं करते. आई डोंट नो, अगर हम लोग हैं एज अ पेरेंट, हम लोगों के पास गूगल है, इंटरनेट है, सर्टिफिकेशन है, आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू इट. आई हैव नो आइडिया. ये बड़ा $1 million क्वेश्चन है कि वो why they don't do it, but this is truth. They don't put the effort that we put ourselves. But actually इसका डॉक्टर बॉगनर ने काफी अच्छा जवाब दिया था ना the other day, and he said कि like as doctors they go to school, ठीक है, मेडिकल स्कूल जाते हैं, टेक्स्ट बुक के थ्रू इंसान पढ़ लेता है जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स हैं, and then 9 to 5 they're just doing this thing. उसके अंदर कोई पर्सनल स्टोरी नहीं है, एक पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है. लेकिन when it comes down to autism parents जो कि मेडिकल इंडस्ट्री में आ गए हैं, या well जैसे कि हम लोग ही हैं, you're a professional, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उसके अंदर हम लोगों की स्टोरी थोड़ी पर्सनल है. we have an जैसे कहते हैं intrinsic motivation है, अंदर से है कि नहीं, we want to help our kids, we need to help our kids, so we actually are better researchers. जैनब ने कहा नहीं, ये बात तो सही है. लेकिन इस स्लाइड के ऊपर आई हैव पुट टुगेदर अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेस. अब एक्सरसाइजेस कोर के लिए बहुत सारी हैं. द रीजन मैंने सिर्फ ये 3 डाली हैं इज बिकॉज दीज आर समवट इजी टू डू. ये अगर आप अपने बच्चे के साथ कर सकें, वैसे तो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? मोस्ट ऑफ आवर किड्स डोंट लाइक टू डू दीज एक्सरसाइजेस. अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ तो ये करना फिर भी आसान है, लाइक अंडर 2 or 3, तो ये तो फिर भी आसान है. आप जिधर भी बैठे हुए आप उनके साथ जो है उनको जमीन के ऊपर, कारपेट के ऊपर, इवन बिस्तर के ऊपर आप ये कर सकते हैं. द ओल्डर द चाइल्ड गेट्स इट्स हार्डर. तो उसके अंदर आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा. इसमें ऑब्वियसली फिर जरूरी होगा कि उनके पास इमिटेशन स्किल्स भी मौजूद हो. यू कैन डेफिनेटली टेक एन ओटीज हेल्प कि नहीं मैंने कोर पे काम करना है. आप मैं चाहती हूँ कि इस प्रेजेंटेशन के बाद लोग यहाँ से जाएं तो दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट विद देयर ओटीज एंड देयर फिजियो कि नहीं हमें इस चीज पे काम करना है. जिधर हेल्प ले सकते हैं प्लीज लें. तो वी वांट टू वर्क ऑन दिस. लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी, वो खूबी इस प्रोग्राम की आई सपोज ये है कि एज अ पेरेंट दिस चैलेंजेस मी. मुझे अपने बच्चे को डिफरेंट तरीकों से engage करना है, मोटिवेट करना है टू गेट थ्रू दिस. एंड आई फाइंड कि ये दैट इज प्रोबेबली हार्डर टू डू. लेकिन वंस दे गेट इनटू द रिदम ऑफ इट, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे डू लाइक मूवमेंट. You can make this very playful as well. इसके अंदर मैंने play based reflex integration कैसे करनी है, मैंने उसके भी resources डाले हैं. I'll share in a minute. ज़ैनब, ये exercises आपने कब की थी last? मैं actually I was just smiling क्योंकि
Batool and I are such a great team. We bring different perspective. क्योंकि हालांकि obviously आयान का age भी different है और मतलब सब कुछ different है. मेरे बेटे की age he's 11 and उसका compliance is so great. मैं वो बतूल कहती she's challenged. I actually मेरे लिए challenge इसलिए क्योंकि मैं guilty feel करती हूँ. आहिल को इतना enjoy, मैंने उसके साथ ये exercises करना शुरू की, उसने इतना enjoy करना शुरू कर दिया कि मुझे गिल्ट फील होता था जब मैं नहीं कर सकती थी और मुझे होता था कि he is enjoying so much and I don't have time because it takes time and that's what I want to tell you and I'm guilty of it because I would say अच्छा वीकेंड पे हम यहाँ सारा दिन बिजी हैं, मैं आ गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैंने नहीं किया and मुझे पता होता था कि मैंने नहीं किया वो he was ready, he was eager, he really wanted to. मैं अपने इंस्टाग्राम में तस्वीर भी शेयर करूंगी. मैंने उसकी 2-3 तस्वीरें खींची थी. वो इतना क्यूटली वो जो लिजर्ड क्या है वो वाला लिजर्ड एक्सरसाइज है ना उसका ये तो सारी जू it's so funny. This is actually zoo animal development movement exercises, right? So it's like a lizard exercise. There's like a starfish and all these. Yeah. And they really, and his favorite was the lizard one. He would do it so nicely, and it was like lizard is hard to do. That's amazing. Lizard is hard to do. और हाँ इसमें अभी बतूल कही थी आप ओटी की हेल्प भी कर सकते हैं और दूसरा ये भी आई वांट टू मेंशन कि अगर कोई एक्सरसाइज शुरू में हार्ड है, जिस तरह ये सुपरमैन की एक्सरसाइज बहुत आसान लगती है लेकिन ये बहुत मुश्किल होती है एक्चुअली टू डू इट. वो आप मेरे बेटे की ना थोड़ा सा ऐसे होता था जिस तरह प्लैंकिंग नहीं है, प्लैंक करना देखने में तो लगता है अच्छा ये तो बड़ा आसान है लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो यू कैन नॉट एक्चुअली रिटेन इन द स्टार्ट. आप तो कुछ सेकेंड्स कर सकते हैं, मिनट तक नहीं जा सकते. और इसका भी कैसे आपकी जो शेक करना शुरू हो जाती है आपकी लेग. तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप इफ दे नीड हेल्प इट्स ओके टू हेल्प देम. हैंड्स ऑन हेल्प करने में कोई मसला नहीं. इसका ये नहीं होगा कि ओहो मैंने हेल्प कर दी तो अब तो फायदा नहीं. लाइक शुरू के अंदर ब्रिज के अंदर मैं अयान के बैक के नीचे एक कुशन रखती थी. ही कैन अंडरस्टैंड कि मूवमेंट क्या है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. तो इसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने वही तो कहा ना कि इसके अंदर पेरेंटिंग भी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है. आपको एज अ पेरेंट बन के एज अ थेरेपिस्ट बन के काम करना पड़ता है. बट इफ यू कीप इट प्लेफुल then it is a positive experience. Alina का question है how much time should be spent on these exercises. Alina किताब के अंदर इसकी और भी exercises हैं. इधर तो मैंने सिर्फ 2-3 ही डाली हैं because I know कि ये individualized होंगी in terms of कि बच्चा कितना कर सकता है, in terms of कि बच्चे की age क्या है और like variety of skills कि वो imitate कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. लेकिन if a child cannot hold a plank for more than 30 seconds, we have a problem. Right? Because it will impact the brain. उधर से पता चलता है कि core काफी weak है और अगर core weak है तो then the rest of the motor skills start to deteriorate. So we want to really focus on the core. According to Dr. Melillo, reflexes, core, brain balance. ये 3 principles हैं. और इसमें what worked for us was कि आप ऐसा करें कि जिस तरह for example 7-8 exercises हैं. डिपेंडिंग ऑन जब आप बुक में अपना असेसमेंट कंप्लीट करेंगे और फिर स्कोर करेंगे, फिर वो आपको बुक में ही आपको बताएगा कि भाई आपके बेटे की या लेफ्ट साइड डेफिशिएंसी है या राइट साइड है या डोमिनेंस क्या है. एंड देन दे वुड हैव दैट कि फॉर लेफ्ट ब्रेन डेफिशिएंसी यू हैव टू डू दिस, फॉर लेफ्ट राइट ब्रेन डेफिशिएंसी आपने ये एक्सरसाइजेस करनी. फॉर एग्जांपल आपके पास 8 रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स एक्सरसाइजेस. The good thing is not to start. I think the way forward is not to start with all 8 of them together because especially शुरू में आपको जब बच्चे को हेल्प भी करनी होगी ना तो मेरे ख्याल में घंटा तो फिर आप इसी में लग जाएंगे, फिर मेरी तरह आप सुस्त हो जाएंगे. बच्चे की वो बच्चा करने को तैयार होगा, आप कहेंगे ये घंटा मैं कहाँ से निकालूं. But so I think what worked for us was taking 3 in the start, doing 3 of them. 15 मिनट्स में अगर बच्चे को परफेक्टली एक्सरसाइजेस आती हैं और वो कंप्लीटली कंप्लायंट है तो आपको 15 मिनट्स लगने हैं. लेकिन अगर आपको इसी को एक्सटेंड करते जाएं कि पहली दफा है तो आधा घंटा लगेगा शायद, फिर ये भी हो सकता है अच्छा जब वो आधा घंटा 15 मिनट्स में हो गया क्योंकि अब आपने उसको भी समझ आ गई, वो भी अब रूटीन की तरह कर रहे हैं, तो फिर आप एक और एक्सरसाइज ऐड करें. और बच्चे बड़े इंजॉय करते. और कुछ इसमें एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिस तरह वो जो कौन सा वाला वो है पामर रिफ्लेक्स वाली जो एक्सरसाइज है, तो वो तो आपको ये नहीं, आप वो बच्चा टीवी देख रहा है तो आप बच्चा कर सकता है. सो इट्स नॉट लाइक यू जस्ट पामर के अंदर तो मैं ये भी करती थी कि जो सॉफ्ट बॉल है ना, जो अपनी स्पंजी सी बॉल होती है, उसके अंदर लाइक द लेवल
of complication can go higher. यानी कि आपको कितना complex करना है exercise को, ये आपके ऊपर है, right? तो क्योंकि ये वाली जो है ना one finger at a time, इसके अंदर मैंने YouTube के अंदर videos भी मौजूद हैं, I can tag them. तो ये करना मुश्किल होता है हमारे बच्चों के लिए कि एक एक फिंगर आइसोलेट करो, उनकी फिंगर्स सारी साथ हो जाती हैं. तो पहले तो I would work on just full hand squeezes, right? And then फिर मैंने अयान की फिंगर्स को वन एट अ टाइम मैं खुद मैनिपुलेट करके स्क्वीज करती थी. तो इन टाइम ही अंडरस्टूड कि ये क्या एक्सपेक्टेशन है, अम्मी क्या चाहती हैं, एंड देन ही वाज एबल टू डू इट हिमसेल्फ. तो थ्रू द लेवल्स यू टेक देम थ्रू, राइट? बट यू हैव टू मेक श्योर कि ना तो आप ओवरवेल्म हो ना बच्चा ओवरवेल्म हो. ये एक्सरसाइजेस लाइक ज़ैनब सेट के देखने में यानी कि सही लगती हैं, बट देन यू स्टार्ट डूइंग, ये मुश्किल होती हैं. You can always modify things, modify it to their level. अब जैसे कि सिटअप्स हैं, डॉक्टर मिलिलो इज वेरी यानी कि पर्टिकुलर अबाउट प्लैंक्स एंड सिटअप्स. तो सिटअप्स के अंदर अयान को मुश्किल होती है, बट ही सेज कि आप हाथ से हेल्प करके उनको ट्राई एंड लिफ्ट देम अप सो दे कैन अंडरस्टैंड. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे आर सपोज्ड टू गेट स्ट्रांग, राइट? तो ये एक प्रोसेस है. इट वोंट हैपन इन वन नाइट. तो अभी तो हमारी 2-3 स्लाइड्स आई थिंक और मौजूद हैं. आई थिंक ज़ैनब हम काफी लंबा जा रहे हैं इसमें. तो ब्रेन बैलेंस के हेमिस्फीरिक एरिया पे तो मैं अब आई हूँ. ये एक चीज है कि लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन, वन कैन नॉट ग्रो स्ट्रॉन्ग विदाउट द अदर, राइट? तो अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो राइट ब्रेन ट्रबल में है. अब इसके अंदर उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये मैंने एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, किताब के अंदर और भी डिटेल में है, प्लीज जरूर पढ़िएगा. तो लेफ्ट ब्रेन जो है ना ज़ैनब, which I thought कि you know maybe your son was falling more in the left brain, उसका एक यानी कि 3 सिनेरियोस मौजूद है. या तो आपका बच्चा ज्यादातर लेफ्ट ब्रेन की तरफ पढ़ेगा, ठीक है, या राइट ब्रेन साइड का प्रोफाइल होगा. ये भी हो सकता है कि समवेयर इन द मिडल. लेफ्ट ब्रेन के बच्चे वर्बल होता है, राइट? दे आर वर्बल, दे आर मोटिवेटेड, वो सीक्वेंशियल होते हैं. You mean left brain dominant और लेफ्ट ब्रेन डेफिशिएंट? अभी मैं डेफिशिएंसी पे नहीं आई, डेफिशिएंसी की स्लाइड मेरी फॉलोइंग है. राइट नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग के व्हाट इज लेफ्ट ब्रेन वर्सेस राइट ब्रेन. ये डेफिशिएंसी है, बट द वन दैट आई एम ऑन ओवर हियर इज हाउ टू आइडेंटिफाई. क्योंकि ये मैं और आप भी तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हो सकते हैं, राइट? हाँ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग. और मैं इस पे ये माय टिप वुड बी फॉर यू दैट कि वो जो असेसमेंट जब आप बुक पे की करें ना, तो एक आप करें और एक आपके हस्बैंड करें, क्योंकि दोनों के रिजल्ट डिफरेंट आ सकते हैं. क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपके ख्याल में बच्चा आपका कर सकता है कि नहीं. इट्स सो फनी बिकॉज अपेरेंटली मी एंड माय हस्बैंड्स पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट ऑन व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट ही कैन डू. या एब्सोल्युटली. तो लेफ्ट ब्रेन जो है इज समथिंग जो कि ज्यादातर कहता है कि लेट्स गो, you know, speed में let's go ahead, let's do it. Right brain is the cautious one, कहते हैं नहीं ठहरो, इसको सोचते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं. तो right brain के आगे मैंने stop का साइंस ही लगाया है कि right brain is the braking section of our brain, और left brain जो है वो कहता है go, you know, थोड़ा सा impulsive. Left brain के अंदर reading और math के अंदर वो अच्छे हो सकते हैं. math में like not complex math मगर basic math, they're good with that. उनका fine motor जो है वो अच्छा हो सकता है. मगर उनको वर्चुअल वर्ल्ड काफी पसंद है, राइट? दे डोंट लाइक टू बी अराउंड पीपल एज मच, और वो इतना सोशल इंटरेक्शंस एंजॉय नहीं करते. डिटेल ड्रिवन बहुत होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, एंड दे वांट रिपेटिटिवनेस, कि वो सेम चीजें चाहिए हैं. आपने देखा होगा ऐसे कुछ मेंबर्स हमारी फैमिलीज में होंगे जो कि यू नो उनको अचानक से सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते. फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस यानी कि फीलिंग्स जो है एंगर, जॉय, हैप्पीनेस, क्यूरियोसिटी, ये सब लेफ्ट ब्रेन की प्रोफाइल्स में होता है. और लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज भी होती हैं. और मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ओ माय गॉड, हम लोग अपने बच्चों को कितनी लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटीज देते हैं, उससे तो वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट और ही होते जाएंगे. यू नो, सुबह से शाम तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, academic concentration on the academics, right? Yeah, so much emphasis on academics. अब एटलीस्ट बाहर के मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगा है, अभी आया नहीं है, कॉल्ड नेचर स्कूल्स या आउटडोर स्कूल्स. तो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस कि इतना एकेडमिक फोकस स्क्रीन से और बुक से हटा के हम थोड़ा नेचुरल लर्निंग के ऊपर भी लेके आए, बट दे आर नॉट देयर येट. तो अगर आप किताब में आपका बच्चा बैठा हुआ है, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहा है, फिर घर वापस आके होमवर्क हो रहा है, फिर तैयारियां, दैट इज वेरी लेफ्ट ब्रेन फोकस्ड. थेरेपीज, व्हाट आर थेरेपीज? If they are not play based,
If they're flashcard dependent, they're rote, then again, you're doing too much of the left brain. ठीक है, रीडिंग आपका स्क्रीन टाइम, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड, आप रियल लाइफ रियल पीपल में नहीं है, आउटडोर नहीं है, नेचर में नहीं है, दैट्स ऑल लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट. पॉप म्यूजिक अगर बहुत सुनते हैं, you know, which my son does. Actually, he's a bit of an expert on it. उसको म्यूजिक बहुत पसंद है. तो that's all left brain stuff, and I was able to identify मेरे बेटे का प्रोफाइल लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, which means कि उसको right brain deficiency है. So we'll talk about that in the next slide. Let's talk about the right brain. Right brain is the first side of the brain to develop, right? इसके अंदर 0 to 3 years of age के अंदर right brain develop हो रहा होता है. Left brain तब तक develop नहीं होता, which is why जब हमारे primitive reflexes हो जाते हैं, neurological disorders होते हैं, developmental delays होते हैं, तब हमारे बच्चों का right brain immature रह जाता है, and then the left brain takes over. तो मैं राइट और लेफ्ट में बहुत कंफ्यूज तो नहीं कर रही, ज़ैनब, चेकिंग इन विद यू? नहीं. ओके, सो राइट ब्रेन के अंदर आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी सोशल इंटरेक्शंस, आपकी रिलेशनशिप्स, लोग क्या कहते हैं, आप फील करते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट करते हैं, आप अफेक्शनेट होते हैं. सो दीज आर ऑल द राइट ब्रेन फीलिंग्स एंड वी वांट मोर ऑफ दैट. वो चीज़ें हम चाहते हैं. राइट ब्रेन के बच्चे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, क्योंकि अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को डाउट करते हैं, जज करते हैं. फीलिंग्स ऑफ फियर, सैडनेस, गिल्ट, शेम, ये सब लिव्स इन द राइट ब्रेन साइड ऑफ द ब्रेन. अच्छा, एक्टिविटीज राइट ब्रेन की कौन सी हो सकती हैं? क्रिएटिव, आर्ट्स, प्ले, creating something, having new experiences, meeting new people, slow, melodious music, ये वाली चीज. That is right brain. Well, what do you think about this, Zanab? मैं सिर्फ ये सोचू, एक क्वेश्चन इधर आया हुआ है, आई डोंट नो, डू यू वांट टू एड्रेस इट राइट नाउ और लेटर? और दूसरा मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ये हम क्लैरिफाई करें कि ये एक्सप्लेन कंफ्यूजन ना हो जाए. जब आपने लेफ्ट ब्रेन को एड्रेस करना है तो आपने राइट ब्रेन वाली एक्टिविटीज करनी है. अगर डेफिशिएंसी लेफ्ट ब्रेन की तरफ है, देन यू हैव टू इनकरेज योर किड टू डू right brain activities, and if you want to address the right brain, then you have to encourage your kid to do left brain activities. So इसीलिए वो dominance और deficiency का फर्क जो है वो बड़ा वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये थोड़ा confusing हो जाएगा, ये थोड़ा सा simplify I think करना जरूरी है हर किसी. Yeah, and absolutely. किसी ने लिखा है कि if it's in the middle तो वो whole brain deficiency आप देखें, यानी कि दोनों हेमिस्फीरिक साइड की डिफिशिएंसीज पॉसिबल है. अब इन्होंने इधर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मास्टर हेमिस्फीरिक चेकलिस्ट, किताब में भी मौजूद है, इधर पीडीएफ की स्लाइड्स के अंदर मैंने लिंक भी दिया हुआ है, तो यू कैन गो एंड फिल दैट आउट अपने बच्चों के लिए. तो आपको दोनों साइड का स्कोर पता चलेगा. दैट कंबाइंड विद ऑब्वियसली जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सी साइड थोड़ी कम है. आंखों की सिमेट्री, फेस मसल्स, चलने की गेट, हेड टिल्ट्स, आप ये पूरा प्रोफाइल लेके देन यू कैन काइंड ऑफ फिगर आउट कि हमारा बच्चा जो है वो लेफ्ट ब्रेन डिफिशिएंट है कि राइट ब्रेन डिफिशिएंट. और मेरा यही मशवरा है, इस तरह आप अगर इस तरह देख के लिस्ट में करना मुश्किल होता है. जब आप वो असेसमेंट खुद करते हैं ना, देन आपको जब स्कोर के बाद रिजल्ट आता है, आपको खुद ही पता चल जाता है. दैट्स वेरी सिंप्लीफाइड. तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो रादर देन ट्राइंग टू फिगर आउट फ्रॉम हियर के भी एक स्टेप करें, बेहतर है असेसमेंट करके आपको रिजल्ट. एब्सोल्युटली. और फिर जब डिफिशिएंसीज की बात आती है तो ये चीज है ना कि राइट ब्रेन डिफिशिएंसी, जहां मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म, डॉक्टर मलीलो का कहना है कि मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म ट्रेट्स लाई इन राइट ब्रेन डिफिशिएंसी. मैंने कुछ केसेस देखे हैं जिधर ब्रेन इंजरी के केसेस हैं जिधर वो लेफ्ट ब्रेन की तरफ ज्यादा जा रहे होते हैं, बिकॉज आई गेस उनका राइट ब्रेन डेवलप हो चुका होता है. मगर मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म प्रोफाइल्स, ADD, ADHD, वो राइट ब्रेन डिफिसिट की तरफ ज्यादा होते हैं. उसके अंदर आप डिफिसिट्स में देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो उनका मसल टोन वीक होता है, उनके ग्रोस मोटर स्किल्स डिलेड होते हैं, उनकी नॉन वर्बल स्किल्स जो हैं वो एब्सेंट है. नॉन वर्बल मायनी हेड नॉड्स, पॉइंटिंग, जॉइंट अटेंशन, ये वाली चीजें उनकी वीक हैं. बिहेवियर उनका अवॉइडेंट है. अच्छा, नंबर्स पे बड़े अच्छे हैं, नंबर्स सीख लिए, अल्फाबेट सीख लिए, लैंग्वेज जो है वो इतनी नहीं. इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है कि आई नो अ मॉम, उनका बेटा जो है वो बिल्कुल बोलता नहीं था, और जब वो गया डे केयर गया तो उसने
वैसे ये बहुत कॉमन भी है कि राइम्स बच्चे बोल रहे होते हैं, वो वर्बल नहीं होते, रियल लैंग्वेज उनके पास नहीं होती, बट दे आर जस्ट राइमिंग. खैर वो बच्चा जो है वो काउंटिंग उसने सीख ली, एबीसी सीख ली, मैथ की कैलकुलेशन कर रहा है, बट देयर इज नो रियल लैंग्वेज. लाइक वो एड्रेस नहीं कर रहा पेरेंट्स को, वो हाउ ओल्ड आर यू, या जो लैंग्वेज होती है उसमें वो नहीं है. बट ऑल दीज थिंग्स व्हिच क्लियरली नाउ टेल्स यू दैट which brain now quiz, which brain was it, left brain or right brain? it takes some time and understanding. इस चीज में इतने कंफ्यूज ना हो. पहले आप अपने बच्चे की लिस्ट बनाएं और उसमें लिखें कि कौन कौन से आपको एरियाज नजर आ रहे हैं. लाइक वो प्रेजेंटेशन क्या है आपके बच्चे का, प्रोफाइल क्या है, पहले उसको लिखें फिर मैच करें. बिकॉज ये चीज ट्रिकी हो सकती है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन इट. अब जैसे कि एक और सवाल है कि if a child is right brain deficient they should do left brain activity. Yes. तो yes, तो उसमें मगर उसकी भी वैरायटी मौजूद है. तो आई थिंक इट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट आई हैव पुट हियर कि अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम बेटी लुमोंट वाला प्रोग्राम क्यों ना करें, न्यूरोलॉजिकल रीऑर्गेनाइजेशन, एक एमआरएनआई के ऊपर भी हमारी इंक्वायरी आई थी. हाँ, हम डॉक्टर मिलीलो के इतने फैन क्यों हैं? नहीं, एक्चुअली मैं personally, obviously there's Dr. Melillo, there's Dr. Kyle Dager, and there's so there's Brandon, this third guy, right? They're working on NeuroSage, which is like a if you honestly speaking, I think I was talking to somebody and they said there's the video game, और मैं इधर जरूर इस बात को एम्फसाइज करना चाहूंगी, बिकॉज जब मैं अपनी ऑटिज्म सर्टिफिकेशन भी कर रही थी तो मैं हर आफ्टर एवरी डे माय पॉइंट वाज दैट के जब भी हमें वीडियोस दिखाई जाती थी, या हम लोगों को कोई, आपको पता होगा एक मूवी है रेन मैन, बिग बैंग थ्योरी का तो सबको पता है, वो है, उसमें शेल्डन है, तो या जो Temple Guardian, who's obviously such an inspiration for everyone. Uski movie ki clips and clubs, and I've always struggled with the representation of autism towards this one brain dominance people. Do you get it? So actually, that brings me to, that makes me feel. I feel that कि उस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा imbalance create होता है. Especially actually this is a good thing that you mentioned. अगर आप उसको देखें, बुक के अंदर ही एग्जांपल दी हुई है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है ना, he was delayed. 7 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन did not speak. ये अपने नोबेल प्राइज विनर एंड कितने बड़े रिसर्चर, इतने important scientist has turned the way science is now. Did not speak until 7, ठीक है, and did not do well academically. तो जब उनके ब्रेन को एग्जामिन किया गया लेटर, तो दे फाउंड कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन वाज वेरी कनेक्टेड, दोनों हेमिस्फीयर्स बड़े कनेक्टेड थे. तो ये कैसे किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन सेज के, वेल ही यूज्ड टू से कि जब उनको कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी तो वो पियानो बजाने के लिए बैठ जाते थे और फिर उस प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते थे और साथ में पियानो बजाते थे. नाउ जस्ट लुक एट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ओवर हियर. आप दिमाग के अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, हाथ आपके पियानो बजा रहे हैं, वो ऑडिटरी फीडबैक आपको वापस जा रहा है, एंड द होल ब्रेन इज लिट अप. पूरी ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड है. And these are the things which we don't do in our world anymore, which is kind of leading us towards Alzheimer's and even some of the other issues that are like forgetfulness and memory problems that we're having. And although I love these examples, and I really like, I mean, obviously the smart people of, and they're like successful and smart, and they're like Nobel Prize winners, and they're big success. Just tarah wo kya, the Apple guy. So, but the whole thing is that इसमें फिर एक और भी बात है. देखें, again, मैं ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसमें बिकॉज हम लोगों ने भी ये जिक्र किया, तो नॉन वर्बल डज नॉट मीन that the child was a severe autistic. See, non-verbal ये बड़ा confusing term है कि अच्छा, लेकिन they could be as smart as anybody. They would be. Plus academics में अच्छा ना होने का भी मतलब नहीं है कि आपके बच्चे की cognition weak है या उसका IQ level weak है. दोनों चीजों से इक्वल्स टू जो कि हम लोगों का लिखा बताया जाता है, ये जनरली डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट या असेसमेंट जब आपको करते हैं, तो उसमें ये बात बहुत ज्यादा होती है. अच्छा, अगर पता चला कि बच्चा नॉन वर्बल है तो वो नहीं कर सकता, देन, या अगर वो एकेडमिक्स में वीक है, तो दोनों चीजें डज नॉट मीन दैट योर चाइल्ड इज नॉट स्मार्ट.
And when she was आपने म्यूजिक की बात की तो आई थिंक वो हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि म्यूजिक आपके दोनों ब्रेन को यूज करता है. Oh yeah, लाइफ अब डॉक्टर मिलिलो ने ऑब्वियसली इसमें 2-3 चैप्टर्स और किए. एक्चुअली मैं इस अपने थॉट को कंप्लीट करना चाहती थी कि रीजन मैं डॉक्टर मिलिलो की इस मेथोडोलॉजी को प्रेफर करती हूँ इज बिकॉज ही टॉक्स अबाउट ब्रेन बैलेंस. आई डोंट थिंक एनीवन इज टॉकिंग अबाउट ब्रेन बैलेंस. आपके पास लोग रिफ्लेक्सेस के बारे में भी बात कर रहे हैं, बेटी लेमॉन का भी प्रोग्राम मौजूद है, MRNI भी मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद हैं, बट लाइक नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि एक साइड डिफिशिएंट है और दूसरी डोमिनेंट है. तो टू मी ब्रेन स्टिमुलेशन अगर आप घर पे कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए टू इम्प्रूव देयर ब्रेन डेवलपमेंट, एंड दैट इज अ विन. ये चीज इतने आसानी से नहीं मिलती आपको. बिल्कुल अलीना, म्यूजिक स्टिमुलेट्स बोथ पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अगेन. एंड ऑल्सो मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी. डायग्नोसिस है, उसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम डिसफंक्शन. और वो जो है कॉर्पस कॉलोसम इज लाइक द पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच कनेक्ट्स बोथ द राइट एंड द लेफ्ट. सो कुछ बच्चों सारे सिम्टम्स भी उसके ऑटिज्म वाले ही हैं, और उसको एड्रेस करने के जो सारे द वेज टू एड्रेस इज आल्सो द वंस द थेरेपीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ इज आल्सो. बट आई थॉट दैट्स समथिंग tiny bit of information. Yeah. Well, thanks for sharing that, Zainab. तो चलिए मैंने इधर ये लिखा हुआ है कि stimulating the left and stimulating the right. इसमें बेस्ट ये होगा कि आप जब प्रोग्राम बनाइए तो अपने लिए एक चार्ट बना लें. अगर आपको ये करने में मुश्किल हो तो reach out to me, reach out to Zainab. We're here to help you. We can coach you. Well, I'm even studying this. तो इसके अंदर एक obviously if you sit down with the chart, then you'll know कि अच्छा मैंने किस एरिया पे कब काम करना है, कितना करना है. आपने अपनी रेपिटेशंस बढ़ाते जाएंगे. तो इक्विपमेंट बहुत सिंपल है. अगर आप राइट साइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी ब्रशिंग लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, बिकॉज वो जो अगर राइट साइड डिफिशिएंट है, आपकी वीक है, आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि नहीं जी मेरे बच्चे को राइट साइड ऑफ द ब्रेन डिफिशिएंसी है, एंड द ब्रेन कनेक्ट्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी वाइज. ठीक है, नॉट ऑल द सेंसेस, जस्ट द बॉडी. तो आप यूर ब्रशिंग ऑन द लेफ्ट, ड्राई ब्रशिंग, डीप जॉइंट मसाजेस, all that you're doing, and vibration as well. Exactly, all is happening on the left side. अच्छा, जो म्यूजिक है वो I think I'm forgetting now कि वो किस साइड के ऊपर बजानी होगी, but music different. No, music is also the same opposite, right? Auditory, yeah. तो उसके अंदर म्यूजिक की मगर frequencies जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, right? You like we know कि left brain music is different and right brain music is different. तो आप डॉक्टर मिलीलो की खुद की ब्रेन बैलेंस म्यूजिक मौजूद है. इफ यू वांट टू परचेज इट, it's very cheap, it's very affordable. If you don't wish to do that, he's also put down samples of the music that you can download yourself. You can play that. अगर बच्चा ears के ऊपर नहीं tolerate कर रहा, जो कि हमारे बच्चे usually नहीं करते, play around them so they get used to the idea. And that's what I actually, this is also another tip that I want to give. That's what I used to do. Like when we are playing, because Ahil loves music. So when we were doing the exercises, I would just play it in the background. Makes life easier for me. But I know my friend has used it extensively, but on its own. खाली बैठ के वो बच्चा खाना खाते हुए म्यूजिक उसको सुना रहे हैं and all. So आप ये multitasking भी कर सकते हैं. ये you don't really have to spare बिल्कुल भाई 1 hour इस कमरे में, छोटे से कमरे में, बगैर खिड़की के. And I like to split things up. जैसे कि nose के लिए I like to I mean Dr. Melillo की recommendation है कि for stimulating the right side of the brain you should be using citrusy smells like lemon and peppermint and eucalyptus, right? तो right collar के ऊपर आपने लगानी है. तो आप सुबह मॉर्निंग में लगा दें, एक दफा दोपहर में लगा दें, तो like you can really distribute the way you do these things. ये पूरा 1, 1.5, 2, 3 घंटे बैठ के काम नहीं करना है. वो जिंदगी अपने ऊपर आसान बनाए थोड़ी. टूथब्रश है, एक सुबह में होगा, एक रात में होगा. So you can disperse those exercises during the day. ठीक है, अब इसमें लाइट्स के ऊपर भी बात है, साउंड पे बात है, वाइब्रेशन है. You can use electric toothbrush. अगर किसी को oral motor की ज्यादा weakness है, use the Z-Vibe. It is available in Pakistan, so you can do that. And there are a whole lot of other things as well in the book. This is just a sample of what you can do in a typical day. ज़ैनब ये लाइव 1.5 घंटे से ऊपर जा रहे हैं. I know, वो कहेंगे ये दोनों बातें करती रहती है, दरमियान में और स्टोरियां करती रहती है, especially ज़ैनब. Time to wrap this up. So I love this quote. Simply put, the music that our brain plays based on our unique symphony, that makes us unique.
So that's quite literally how we summarize this. I think this brings an end to our presentation. किसी को PDF के documents चाहिए हो तो please do comment and I will share. Anyone wanting to reach out to us, that's the WhatsApp number, that's the website. And these are some of the resources that I have put together for you. Symphony of Reflexes is here if you want to learn more about reflexes. Dr. Melillo's book, Disconnected Kids, is there. Dr. Melillo has written a few other books. If you wish to see, go look it up. And I also like Kokeb. She does primitive reflexes ki integration in a play-based method, and she has a gazillion play ideas that you can do for kids different ages. एज अप्रोप्रिएट और जैसे कि किसी ने कहा था कि जी मेरा बच्चा तो नहीं मुझे इमिटेट करेगा तो you do those exercises on them. And quickly a question I think we left. How long have you, I mean very short answer, but how long have you been doing these exercises with your kids and what benefits have you gained from these exercises? You 5 minute answer दें आप. I am still doing them. I feel like I'm still getting better at doing them. And I'm still doing them for the rooting. मेरे बेटे का अभी भी rooting reflex है. I do integrate it every day. And I'm still working on it, but it's improving. So we notice clearer sounds. तो जो स्पीच की बात है ना कि ज़ैनब ने मुझसे कहा था कि बतूल ये ज़रूर इंक्लूड करना कि स्पीच के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा. इधर मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि जिस हद तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन डेवलपमेंट को लेके और ऑब्वियसली जिसके बारे में डॉक्टर मलीलो एंड यू नो मोस्ट ऑफ दीज अदर साइंटिस्ट टॉक अबाउट एज वेल, हमें कहने में बड़ा आसान है कि जी आप बोल दें, मैं और ज़ैनब बातें कर रहे हैं, हम मुस्तकिल ही गुफ्तगू कर रहे हैं, इट्स सो ईजी फॉर अस. लेकिन हमारे बच्चों के लिए उनको वही सारी इंफॉर्मेशन जो हम उन्हें दे रहे हैं पहले उनको सुननी है, तो दैट्स अ प्रोसेसिंग फंक्शन. फिर उनको वो कनेक्ट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये जुमलों का मतलब क्या है. Then they have to add their own information on it. तो उनको inference करना है, फिर executive functioning की skills use करनी है, फिर उनको उसको oral motor में तब्दील करके express करना है in a way that is legible and it makes sense. ये बहुत complex process है जो कि हम लोग को simple लगता है, but brain wise it's not a simple process, right? तो when you work on the auditory piece, आप वो improve कर रहे हैं तो बच्चे की listening skills improve हो रही हैं, बच्चे का कोर डेवलप हो रहा है तो द ब्रेन इज गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड. डॉक्टर मलीलो एक जुमला कहते हैं अपनी ट्रेनिंग में काफी दफा कहते हैं कि सिंपल ब्रेन्स simple process makes a simple brain, right? And simple movements make a simple brain and complex movements will make a complex brain. We do want complex brains for our kids. Our kids' brains are too simple. We want them to grow, to mature and get more complex. तो हमने इन एक्टिविटीज के थ्रू ब्रेन को कॉम्प्लेक्स करना है. तो रूटिंग, पामर, म्यूजिक, कोर, ये चीजें एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं स्पीच के लिए. मैं कर रही हूँ और करती आई हूँ, मुझे इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं. हम जिस एरिया में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं which probably is a thing that most people can be familiar with, इसके हमारा एक स्क्रिप्टिंग का इशू चल रहा होता है. हमारे पास बहुत वर्बल स्पीच है, but we also have a scripting issue. That is a left brain का issue, and this left brain issue as in left brain हमारा dominant है, right brain हमारी deficient है. So we're still working on that. So that is what we have seen. Mashallah से speech we have speech. We're working on these other things. Actually, my suggestion would be, it's not ये 3 महीने का दवाई का कोर्स नहीं है that you have to do and then you have to decide whether you'll be doing it or not. I love that. It should be a part of your lifestyle, and I think and I keep on saying this thing, like, as a mother I know that you can have gaps and then you can pick it up again. That's what, it's not that you tried, it was too hard and then you let it go and now you're like, oh my god, see, I failed. It's okay, you can take a break for 2 weeks and then you can keep working on it slightly, because these are so simple and these are so helpful कि आहिस्ता आहिस्ता और फिर eventually it takes time to actually retain some reflex, like to actually simplify it and integrate it. So once the reflexes are retained, so integrate करने में वो time लगता है, उस और time उस पे base ये भी हो सकता है
देखें डॉक्टर मिलिलो भी करता है, उनके ब्रेन बैलेंस प्रोग्राम है, he has like 40 I think centers, yeah, centers in US, and every day in that center is like $1,000 per day. I think it's such an expensive program, and I always talk to Batool और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि वो expensive इसलिए है कि वो बहुत intensive है, उसमें tools भी है और उसमें intensity भी है. yeah. So अगर आप ज्यादा इंटेंसिटी से करेंगे तो मे बी यू कैन एक्चुअली रिड्यूस द टाइमलाइन, बट अगर आप मेरी तरह थोड़े से थोड़े स्लो हैं तो आप जो है वो मेरा लाइक द पॉइंट इज दैट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. और बतूल को इसका पता है, मैं खुद इतनी ज्यादा I want to live myself, and I really want इस पे तो हम लोग एक और लाइव कर सकते हैं कि जो है आउटडोर लाइफस्टाइल कितना इम्पोर्टेंट है, गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग बैक टू नेचर, ये सारी चीजें विदाउट एक्चुअली इन योर फेस कितना हेल्प करती हैं, ना सिर्फ आपको, आपके बच्चे को, इन साइंटिफिकली हेल्प करती हैं ये सारी चीजें. सो वी आर ट्राइंग टू गो, इट्स लाइक सिंपल एक्सरसाइजेस, और ये कुछ एक्सरसाइजेस आप फील करेंगे शायद आप खुद कर रहे हो वैसे बाय चॉइस, आपने बचपन में की हो, आपने प्ले बेस्ड में की हो. अब जैसे टग ऑफ वॉर है, we used to play that tug of war. One of my kids in there, हाँ, and one of my, अभी मेरा एक बेटा 11 साल का, दूसरा 7 साल का, उसने एक दफा नहीं खेली, दोनों ने एक दफा नहीं खेली. That's true. पता नहीं क्या पता स्कूल में खेलते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं खेली. So the whole thing is that कि ये छोटी छोटी चीजें were part of our, actually tug of war is an excellent game for core stability, they said. And actually I was thinking, so ये I think simple lifestyle जो है वो they bring these things together, but now that we live in such a fast paced life, और ये चीजें जो है ना आपको consciously करनी पड़ती हैं, और इस पे consciously effort करनी पड़ती है, जो कि आप हर तरह से कर रहे होते हैं कि भी आपने बाहर लेके जाना है, आपने उसको नेचर में लेके जाना है. अब मेरा बेटा he enjoys going outside in the cold so much, he loves it, he is so different, he's so much calmer, and this is an effort that we want to put, and I understand the science behind it afterwards now, but thinking that this was such a part of our life every day growing up. आप हर रोज शाम को बाहर जाके खेल रहे होते थे. Yeah, absolutely. Do you know, Zainab, what creates new nerve cells? New neurocells, just again. There's only one activity that creates new neurocells. Running. Oh yeah. Oh, that's a difficult one. I'm running. I mean, it's for adults as well as for kids. If you're running, you're creating new neurocells. But that's the only activity that creates it. Only physical activity that creates it. तो आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत लंबा हो गया सब. मेरे ख्याल में पिछले आधे घंटे से लोग थैंक यू कर रहे हैं कि अब आप चले जाएं. अब हम जा रहे हैं. Thank you so much, Zainab, for your time. Thank you, everyone, for your time. If you have missed anything, please leave us a comment and we will get back to you, and we will share the PDFs and the resources. Just to let you guys know, we also have a WhatsApp group. If there is anyone who's interested in being more closely in touch with us, you can find us there. Let us know and we will send you a link. Thank you, everyone. And also, when you're doing it with your kids, please share if you want to in the group. We would love to see them doing it, and of course it would be a good motivation for everyone else. So I think we can schedule like a class, a course, or a Zoom class where we can actually go into demonstrating these reflexes, how to test them, integrate them. That's one thing that's on my mind to share with you in the future. Okay, excellent. Thank you, everyone. Have a great weekend. Take care. Okay, thank you. Bye.